हेलो।
नमस्कार, मैं सुनीता द्विवेदी, डीएलएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्राणी शास्त्र विभाग के द्वारा रोल ऑफ अप्लाइड जूलॉजी इन करंट सिनारियो विषय पर आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस में आप सभी विद्वज्जन एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यह कॉन्फ्रेंस हमारे महाविद्यालय के साथ आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज धामनोद मध्य प्रदेश, द जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, द लाइफ साइंसेज के सहयोग से संपन्न हो रहा है। आप सभी के सहयोग के बिना इस कॉन्फ्रेंस को मूर्त रूप प्रदान करना संभव नहीं था। हमारे इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जी.डी. शर्मा, वाइस चांसलर अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर बी.एन. पांडे जी, प्रेसिडेंट द जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बोधगया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधीर शर्मा, रजिस्ट्रार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ हैं। कीनोट स्पीकर के रूप में हैं हमारे साथ प्रोफेसर उल्रिचबर्ग सर, साइंटिस्ट अग्निहोत्रा जर्मनी। रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रोफेसर कमल जायसवाल सर, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं। प्रोफेसर बी वाइकर सर, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र। प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव सर, फॉर्मर डीन ऑफ लाइफ साइंस बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश। प्रोफेसर वी कुशवाहा मैम, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सोना दुबे मैम, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस NDVSU जबलपुर मध्य प्रदेश। प्रोफेसर GS सोलंकी सर, एक्स प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी मिजोरम यूनिवर्सिटी मिजोरम। प्रोफेसर शिवेश सिंह, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज सतना मध्य प्रदेश। प्रोफेसर शैलेन शर्मा सर, प्रिंसिपल आदर्श इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड साइंस धामनोद मध्य प्रदेश एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। श्री बसंत शर्मा सर, चेयरमैन DLS PG कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी मैम, प्रिंसिपल DLS PG कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। श्रीमती निशा शर्मा मैम, डायरेक्टर DLS PG कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस शुभ कार्य की शुरुआत में सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के सरस्वती वंदन व राज्य गीत के गायन का क्रम है। मैं इसके लिए महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका सुश्री संस्कृति शास्त्री को आमंत्रित करती हूँ। सरस्वती वंदना के लिए कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। संस्कृति शास्त्री मैम, ओवर टू यू संस्कृति शास्त्री मैम। तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया जय हो छत्तीसगढ़ भुइया महू पावे परो तोरे मैया सो है बिंदियासनी घाट
तेरा हरियर है रंग तुर बोली हवे सुघर मैना अजरा तोरे डोलवे पुरवैया जय हो छत्तीसगढ़ भुइया रईगढ़ हावे सुघर तोरे मोर मुकुट सरगु जाओ बेला से पुर है बहिहा रईपुर कनिहा सही घात सुघर भवे दुर्ग बस्तर सोहे जनिया नांदे गाँव नवागर धनिया महू पावे परो तोरे भुइया अर पापरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया महू पावे परो तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद संस्कृति मैम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहती हूँ कि हमारा महाविद्यालय इस कोविड-19 के विषम समय में भी अकादमिक गतिविधियों में आईसीटी के माध्यम से निरंतर जुड़ा हुआ है। हम सबको इन चीजों के लिए उत्साहित करने वाली हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी मैम को मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रिंसिपल मैम। मैम आपकी आवाज मिसिंग है, एक बार अपने आप को अनम्यूट करिएगा। ओके मैम। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुनीता। आज के इस ई कॉन्फ्रेंस में मैं समस्त अतिथिजनों का एवं समस्त जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारे इस ई कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है रोल ऑफ अप्लाइड जूलॉजी इन करंट सिनेरियो, जो कि डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर और आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस धामोड़ एवं द जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बोध गया एंड द सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंस एसएलएस के द्वारा हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल प्रोफेसर जीडी शर्मा, वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। इस ई कॉन्फ्रेंस के स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफेसर BN पांडे, प्रेसिडेंट जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बोध गया बिहार के। हमारे इस कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के आदरणीय रजिस्ट्रार डॉक्टर सुधीर शर्मा। इस महाविद्यालय के और इस पूरे कार्यक्रम के चीफ पेट्रॉन डीएलएस पीजी कॉलेज के चेयरमैन आदरणीय श्री बसंत शर्मा जी, और एक और पेट्रॉन महाविद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती निशा शर्मा। हमारे की नोट पर्सन है आज के की नोट स्पीकर प्रोफेसर उलरिच बर्ग जर्मनी से। रिसोर्स पर्सन है प्रोफेसर कमल जायसवाल, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर BB वायकर, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र। आप भी हमारे बहुत सम्मानीय रिसोर्स पर्सन हैं।
प्रदीप श्रीवास्तव, फॉर्मर डीन ऑफ लाइफ साइंस, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। रिसोर्स पर्सन है आप। प्रोफेसर वी बी कुशवाहा, डी उपाध्याय, गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। आप भी हमारे सम्मानीय रिसोर्स पर्सन हैं। हमारे अगले रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सोना दुबे, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस, NDVSU जबलपुर, मध्य प्रदेश। हमारे अगले रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर GS सोलंकी, एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज सतना, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम की कन्वेनर हैं प्रोफेसर सुनीता द्विवेदी, DLS PG कॉलेज बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मॉडरेटर हैं इस पूरे ई कॉन्फ्रेंस के शैलेंद्र शर्मा, आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ZSI AIMS कॉलेज, धामनोड, MP। तो आप समझ सकते हैं कि इस इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, इन प्रेजेंट सिनेरियो, इन करंट सिनेरियो। तो आज जब हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कोविड-19 आ जाता है और हमारा पूरा फोकस इस पूरे कार्यक्रम का इस कोविड-19 से कैसे हम किस प्रकार से हम कुछ करें जिससे इस कोविड-19 से हमें कुछ राहत मिले, छुटकारा मिले, लोगों को एक कुछ अच्छा आभास हो कि हमने कुछ ऐसा कार्यक्रम दिखाया जिसके वजह से लोग लाभान्वित हुए। लोगों के लाभान्वित होने का ही प्रमुख उद्देश्य है, खासकर विद्यार्थियों का, समाज का। तो इस एप्लाइड बायोलॉजी जूलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कुछ भी जो भी हमें हम पढ़ाते हैं, जो भी हमें ज्ञात होता है, जब तक हम उसको अपने डेली लाइफ से नहीं जोड़ते तब तक उस पढ़ने पढ़ाने का बहुत फायदा नहीं होता। तो जूलॉजी की ये बहुत स्पेशल ब्रांच है एप्लाइड बायोलॉजी, जिससे कि हम उस सीखे हुए मटेरियल को अपनी जिंदगी में प्रयोग में लाते हैं। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व बहुत परेशान है, हम बहुत जूझ रहे हैं इस महामारी से, और इस जूझने के लिए हमें बहुत सारे एहतियात की जरूरत है, बहुत सारे ज्ञान की जरूरत है। वो हमें अप्लाइड जूलॉजी के द्वारा प्राप्त होता है। प्रकृति प्रदत्त है ये बीमारी और प्रकृति के द्वारा ही इसका इलाज भी संभव है, इससे राहत भी संभव है। जब हम वैक्सीन की बात करते हैं या जब हम इससे बचाव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अप्लाइड बायोलॉजी या जूलॉजी की बात करते हैं। पूरा हमारा ये एक जो स्पेशल ब्रांच है वो हमारी निजी जिंदगी से, हमारी प्राइवेट जिंदगी से, प्राइवेट लाइफ से जुड़ा हुआ है और जो हमें राहत प्रदान करता है, जिसके लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट इस ई कॉन्फ्रेंस में बुलाए हैं और वो ही आपको अब इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। मैं बाकी सभी चीजें उन पर छोड़ती हूँ जो कि आप लोगों को बहुत खास जानकारी देंगे, बहुत स्पेशल जानकारी देंगे। पुनः पुनः हमारे DLS महाविद्यालय परिवार की ओर से आप समस्त अतिथियों का, समस्त स्पीकर्स का, समस्त जुड़े हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और DLS महाविद्यालय के कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिनके अथक परिश्रम से हम इस ई कॉन्फ्रेंस को एक मूर्त रूप दे पाए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे के कार्यक्रम के लिए डॉक्टर सुनीता मैडम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू सुनीता मैडम।
धन्यवाद प्रिंसिपल मैम। इसके उपरांत मैं हम सभी के मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत हमारे अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करती हूँ। यह कॉन्फ्रेंस उनके ही विजन का प्रतिफल है जो निसंदेह सोसाइटी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आदरणीय श्री बसंत शर्मा सर, हेलो हेलो, आप क्लियर हैं? आपकी आवाज आ रही है, आप आगे बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सुनीता मैम। रोल ऑफ अप्लाइड जूलॉजी इन करेंट सिनेरियो, इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस जो कि IQAC और जूलॉजी डिपार्टमेंट DLS PG कॉलेज बिलासपुर, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस धामनौद MP, in association with the Zoological Society of India ZSI बोध गया और the Society of Life Sciences SLS के संयुक्त प्रयासों से ये इस ई कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण ई कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक, अभिभावक, संरक्षक प्रोफेसर GD शर्मा साहब, वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर BN पांडे साहब, प्रेसिडेंट जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बोध गया बिहार। वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, रजिस्ट्रार अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर। DLS PG कॉलेज के सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी मैम, DLS PG कॉलेज के डायरेक्टर आदरणीय श्रीमती निशा शर्मा जी, और इस अत्यंत महत्वपूर्ण ई कॉन्फ्रेंस के की नोट स्पीकर प्रोफेसर उलरिच बर्ग साहब, साइंटिस्ट, अग्निहोत्रा जर्मनी। रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर कमल जायसवाल, प्रोफेसर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ UP। रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर BB वेकर, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र। रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव जी, फार्मर डीन ऑफ लाइफ साइंसेस बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर VB कुशवाहा मैम, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर UP। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सोना दुबे जी, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस NDVSU जबलपुर MP। रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर GS सोलंकी साहब, एक्स प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी मिजोरम यूनिवर्सिटी मिजोरम। हमारे विशेष रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर शिवेश सिंह साहब, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज सतना MP। इस पूरे आयोजन के मॉडरेटर प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ZSI AIMS कॉलेज धनौद MP। इस पूरे आयोजन की कन्वीनर जूलॉजी डिपार्टमेंट की हेड श्रीमती सुनीता द्विवेदी मैम, AIQC से की कोऑर्डिनेटर नेहा मैम, DLS कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स, स्टाफ और जिनके लिए ये ई कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है वे सभी प्रतिभागी, मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने कहा, कोविड-19 के इस अभूतपूर्व कालखंड में जीवन की समस्त गतिविधियां रुकी हुई हैं
और पूरी दुनिया इसके राहत का इंतजार कर रही है और सूक्ष्म जीवों के अध्ययन, उनके समस्याओं और उनके समाधान के लिए पूरी दुनिया लाइफ साइंसेस की ओर देख रही है। और हम आज के इस आयोजन में समझने का प्रयत्न करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे, अपने विद्वान वक्ताओं के वैज्ञानिक तर्कों को समझेंगे, वैक्सीनेशन पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसा मैं समझता हूं। वैसे भी कोविड-19 ने हमसे बहुत कुछ छीना है, तो हमें बहुत सी नई बातें सिखाई भी हैं। अब हम एक न्यू नॉर्मल जीवन शैली को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए भी हम अपने काम को कर सकें। वर्क फ्रॉम होम आज के समय की अनिवार्यता है। ऐसे में डीएलएस महाविद्यालय ने अकादमिया, विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों और समाज की आज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों से जुड़े हुए समसामयिक मुद्दों पर वेबिनार्स के श्रृंखलाबद्ध आयोजन का निर्णय लिया है, जो केवल अकादमिया ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी हमें आशा है। विषयों का चयन इस प्रकार किया गया है कि एक आम नागरिक को भी इसका लाभ मिले। पिछले हफ्ते हमने इसी कड़ी में स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया था, जिसमें पूरे विश्व से 1700 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। प्रतिभागियों की इतनी बड़ी संख्या ने हमें आगे और ऐसे ही आयोजनों के लिए प्रोत्साहित किया है। इसी कड़ी में आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार रोल ऑफ अप्लाइड जूलॉजी इन करेंट सिनारियो में हम देश विदेश के विभिन्न विद्वानों को सुनेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम जंतु विज्ञान से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग आज के इस समय में कर सकते हैं और अपने को सुरक्षित एवं स्वस्थ रख सकते हैं। मैं इस आयोजन के अवसर पर आप सबके सामने मैं सुनीता द्विवेदी मैम का मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूंगा, इसलिए कि कोरोना कालखंड के समय से लेकर आज इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को आयोजित करने के मध्य सुनीता जी अनेक माध्यमों से स्वयं को सक्रिय रखी हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, काउंसलिंग करने में, विविध कार्यों को करने में, और उन्होंने बहुत मेहनत से आज के इस आयोजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस आयोजन के लिए मैं विशेष रूप से शिवेश सिंह साहब, शैलेंद्र शर्मा जी का विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने विभिन्न संस्थाओं को, संगठनों को जोड़कर इस अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया है और इसका गौरव हमारे महाविद्यालय और हमारे लोगों को प्रदान किया है। उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आइए हम सब इस अवसर का संपूर्ण लाभ लें और विशेषज्ञों से अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकें। आशा है हम सब इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार। ओवर टू सुनीता मैम। धन्यवाद चेयरमैन सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे ई कॉन्फ्रेंस में हम सबके बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुधीर शर्मा सर, रजिस्ट्रार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से उपस्थित हैं। सर हमारा मार्गदर्शन और हमारा संबल हमेशा बढ़ाते रहते हैं। मैं रजिस्ट्रार महोदय को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू रजिस्ट्रार सर, डॉक्टर सुधीर शर्मा सर। सर आई एम सॉरी बट आपका शायद माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही सर आवाज? सर आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर से
जो आयोजक महाविद्यालय है डीएलएस पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जो इस ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है, उसमें मैं कोई स्पेशल गेस्ट नहीं हूँ। मैं अपने आप को इस ई कॉन्फ्रेंस का एक मेजबान मानता हूँ और हमारे आदरणीय सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर जी शर्मा जी हमेशा से इस बात को स्थापित करते रहे हैं कि विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं वो हम सब एक हैं, अलग नहीं है। तो मैं कभी भी अपने आप को किसी भी महाविद्यालय से इस प्रकार की गतिविधियों के मामले में गेस्ट के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहता। मैं प्रस्तुत क्षमा मांगते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को और जितने भी हमारे स्पेशल स्पीकर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो 2 दिन के इस ई कॉन्फ्रेंस में अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, उन सभी को बता दूं कि मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, मैं एक होस्ट ही हूँ, वो पार्ट का उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक पार्ट ही हूँ। मित्रों, बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स के बारे में अभी आपको मैडम रंजना चतुर्वेदी मैडम ने और श्री बसंत शर्मा जी ने बताया है। मैं उन सबका नाम फिर से दोहरा करके समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हमारे सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर जी शर्मा सर का इस वेबिनार में पूरे विश्वविद्यालय की ओर से, डीएलएस महाविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त इस 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में जितने भी स्पेशल स्पीकर्स हैं उन सभी का इस ई कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे किसी भी प्रकार के एकेडमिक एक्टिविटीज में जब तक हमारे टीचर्स पार्टिसिपेट न करें तब तक कोई भी कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए जिनके लिए ये ई कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, ऐसे सारे टीचर्स जो इसमें आज प्रतिभागी हैं और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ है, उस कॉलेज के सभी जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, प्राचार्य हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का निर्णय लिया है और जो कि निश्चित रूप से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, मूलतः मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, लेकिन स्कूल में कहीं थोड़ा बहुत जूलॉजी मैंने पढ़ा है, बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझे है उसके हिसाब से तो मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान का जो समय है वो साइंस से जुड़े हुए जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का समय लेकर आया हुआ है और उसमें खासकर जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है। मैं किसी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकता, लेकिन ये समय चूंकि हम वैक्सीन की ओर एक निगाह लगाकर देख रहे हैं कि कब इस कोरोना का वैक्सीन आएगा, तो उसमें तो प्रमुख भूमिका लाइफ साइंसेस के साइंटिस्ट की ही होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये कॉन्फ्रेंस है और निश्चित रूप से जितने भी स्पीकर्स होंगे वो वस्तु स्थिति से ही न केवल आपको अवगत कराएंगे, बल्कि भविष्य में क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और कैसी परिस्थितियां बनेंगी उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। एक छोटी सी बात मैं कहते हुए अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैं 37 इयर्स तक टीचर रहा हूं और पिछले 1.5 साल से मैं अटल बिहारी वाजपेयी स्टूडेंट से हमेशा और कभी कभी टीचर से भी मेरी जो चर्चा होती रही है रिसर्च को लेकर के, उसमें मैं ये बात सभी से पूछता भी रहता हूँ, जानने का प्रयास भी करता रहता हूँ कि जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं उन आविष्कारकों के नाम जनरल नॉलेज में दर्ज है और बुक में कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मिल भी जाएंगे। बहुत सारे लोगों का नाम हम वैसे ही जानते हैं,
लेकिन यदि मैं पूछूं आपसे कि आलपिन का आविष्कार किसने किया, चम्मच का आविष्कार किसने किया, चश्मा का आविष्कार किसने किया, तो शायद ये बात अधिकांश लोगों को नहीं मालूम होगी, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आलपिन बनाने वाले ने आलपिन की कल्पना की और वही एक बड़ा रिसर्च हुआ और बहुत काम की चीज हो गई। चम्मच बनाने वाले किसी पहले व्यक्ति के दिमाग में जब आइडिया आया कि स्पून बनाया जाना चाहिए, कि कितना उपयोगी है पूरे समाज के लिए, मानव जाति के लिए, तो उसने बना दिया। अब किसी घर में टीवी हो चाहे ना हो, फैन हो चाहे ना हो, चम्मच जरूर होगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन देखिए आप, कि उसने एक ऐसी चीज के बारे में सोचा जो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उपयोगी है। तो मैं हमेशा से सभी स्कॉलर्स से, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन का हो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप बड़ा सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत छोटे से इन्वेंशन से करिए, तब आप बड़ा कर पाएंगे। सीधे बड़े की तरफ जाने पर हो सकता है, मैं नहीं कहता कि आप असफल होंगे, पर असफल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन यदि आप छोटा इन्वेंशन करेंगे, छोटी चीज के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता की संभावना ज्यादा होगी। लाइफ साइंसेस या कोई भी साइंस के डिसिप्लिन के अलावा जितनी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, हम सब की अभी इस कोविड-19 के दौरान समाज के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी तो है ही, पहले भी थी, और कोविड-19 तो साथियों एक निश्चित समय के बाद वापस चला ही जाएगा, और हम इसकी बातें भविष्य में यदि रहे तो आपस में बात करेंगे, नहीं तो अपने बच्चों के लिए सब यादगार के रूप में छोड़कर जाएंगे। इस समय में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन बहुत सारे फायदे भी हैं। आपको अपने आप का विश्लेषण करने का समय मिल रहा है, आपको रिसर्च करने का समय मिल रहा है, दूसरों के लिए सोचने का समय मिल रहा है, आप क्या कर सकते हैं इसको जानने के लिए आपके पास भरपूर समय है। क्योंकि जब आप अपने शासकीय या अशासकीय सेवा में जिस किसी भी रोजगार से आप जुड़े हुए हैं, उसमें रहते हुए आपके पास टाइम नहीं होता है, आप एक रूटीन लाइफ जी रहे होते हैं, आपकी जीवन शैली अब बदल चुकी है। आप इस जो नेगेटिव टाइम है, कहने के लिए नेगेटिव टाइम है, तो उसको पॉजिटिव टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आज का ये ई कॉन्फ्रेंस इस समय को अच्छे समय में बदलने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो सभी बहुत समय ले लिया मैंने, मुझे जो समय अलॉटेड था उससे ज्यादा समय ले लिया, तो इस बार सबको फिर से सबका स्वागत करते हुए पूरे विश्वविद्यालय की ओर से सभी सम्माननीय वक्ताओं का, सभी सम्माननीय अतिथियों का, सभी सम्माननीय प्रतिभागियों का, और विशेषकर डीएलएस कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट का और उनके जो सहयोगी रहे हैं, जिनके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, उनका मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सादर धन्यवाद, नमस्कार। ओवर टू यू मैडम। सुनते मैम? आप कैरी करिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें अपने आप को। सुनीता मैम?
सुनीता मैम, अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद सुधीर शर्मा सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर जी.डी. शर्मा वाइस चांसलर जी को आमंत्रित करूंगी। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में आज वो उपस्थित हैं। सर का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे महाविद्यालय ने नेक B+ प्राप्त किया है। इनके जैसे विद्वान वक्ता को सुनना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर जी.डी. शर्मा, वाइस चांसलर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ओवर टू यू। एएलएस द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस ऑन अप्लाइड जूलॉजी इन करंट सिनेरियो उपस्थित आदरणीय डॉक्टर B.N. पांडे जी, प्रेसिडेंट जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, रजिस्ट्रार अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, श्री बसंत शर्मा जी, चेयरमैन DLS कॉलेज, डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी जी, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, डॉक्टर निशा शर्मा, डायरेक्टर ऑफ DLS कॉलेज, और इसको कोऑर्डिनेटर और जो कन्वीनर हैं डॉक्टर सुनीता और डॉक्टर नेहा। इस ई कॉन्फ्रेंस में उपस्थित देश विदेश से इनवाइट किए हुए एक्सपर्ट्स, डॉक्टर उल्रिच बार्क फ्रॉम जर्मनी, डॉक्टर BB वेकर फ्रॉम डीन फ्रॉम बाबा अंबेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव फ्रॉम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, डॉक्टर मिसिस UB श्रीवास्तव, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, डॉक्टर सोना दुबे, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेस जबलपुर, प्रोफेसर GS सोलंकी, फॉर्मर हेड जूलॉजी मिजोरम यूनिवर्सिटी नाउ इन नोएडा, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर कमल जायसवाल फ्रॉम लखनऊ, एवं all research scholars, all professors from DLS colleges and other colleges, all other respected principals from different colleges, participants from Chhattisgarh, from other parts of India and abroad. I take this opportunity to congratulate the Zoology Department of DLS College and Shri Basant Sharma ji, who are continuously organizing these academic programs during COVID-19, when our colleges, universities, schools, all educational institutions have been closed down due to COVID-19 pandemic. If we see today's status of the corona disease, we find that nearly 154 million people all over the world have been infected by this coronavirus. And nearly 5,40,000 people have lost their life. In India, it is also spreading very fast. Today's report shows more than 49,000 people have been found infected with corona in last 24 hours. And nearly 30,000 people have lost their life. And nearly more than 12 lakh people
more than 30 lakhs people have been infected by the corona viruses. So we find that the corona, which spread from Wuhan to all over the world, more than 212 countries. The initial organism from which it has come to man was bat. From bat to man in Wuhan. Though some people still believe that maybe by mistake or by knowing, the coronavirus might have come to environment and then to man. From the International Research on Virology in Wuhan, where US was also supporting for the research activities in Wuhan on different viruses, their maintenance, their studies. यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कड़ी है. जब ये बाहर रहता है ज्यादा समय, then it is non living. It can only live within the organism, whether it is bacteria, whether it is fungi, algae, plants, animals, human beings. So different kinds of bacteria, viruses, we call it obligate parasites, or they can only complete their life cycle inside the living body of any organism. In case of corona, only in human being, and इसका जो फैलाव या ट्रांसमिशन हम लोग कहते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन है. और इसी चीज को जो दुनिया सब नाराज है चाइना से, वो इसीलिए कि चाइना ने इसको छुपाया. क्योंकि अक्टूबर में केस आ गए थे, नवंबर में भी पता चल गया था चाइना को कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, बट they did not inform WHO. So they thought that since Wuhan is having New Year celebration in January, 21st January, if they inform, they will lose lot of money. So they were hiding this information. And the director of WHO who visited China was also not informed properly, or else, as people believe, that under some other means, he did not inform the world. So that is why in that function, so many people from different world, particularly from Europe and America, people participated. And they became the carrier of this virus. And that is why, if you see, from very beginning, maximum spread of this virus was in those countries. भारत में भी वायरस की एंट्री उन्हीं लोगों से हुई जो दूसरे देशों से आए, और अब धीरे धीरे अनलॉक होने से, जब तक लॉकडाउन था 130 दिन में 109 दिन में its number was 1 lakh, and in July itself nearly 8-9 lakhs people got infection. और आज यही कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने ये नियम बनाया कि लॉकडाउन 10 दिन के करीब बिलासपुर में रहे, रायपुर में भी करीब 8 दिन का लॉकडाउन है, जिससे कि इसके स्प्रेड को चेक किया जा सके और पीपल एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, घर पर रहे. इसके स्प्रेड को बचाने के लिए मास्क यूज करें, कंटिन्यूअसली हैंड वॉश करें एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स, जिससे कि ये वायरस
को मारा जा सके और इनडायरेक्ट भी इसके टच में ना आए। तो हम लोग अब देखते हैं कि वायरस का अभी ये वैक्सीनेशन प्रोसेस तो चल रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस भी एक अलग प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स का भी यूज होता है। पहले सबसे पहले वायरस का आइसोलेशन, फिर उसका वैक्सीनेशन से या उसको इंजेक्ट किया जाता है एनिमल्स पर, जिससे कि उनमें वो डिसीज को पैदा किया जा सके और फिर उस डिसीज को पैदा करके उस डिसीज को कंट्रोल करने के मीन्स खोजे जाते हैं, चाहे वो केमिकल मीन्स हो जिनको हम मेडिसिन कहते हैं, या वैक्सीन हो, यानी कि एटेन्यूएटेड या लिविंग नॉन वायरुलेंट जिसको हम कहते हैं, कि जो डिसीज कॉज करने की जो प्रॉपर्टी लॉस कर चुके म्यूटेशन से। सेम इंडिविजुअल, यानी कि हो सकता है सेम वायरस या उसी तरह से मिलता जुलता कोई और ऑर्गेनिज्म, वो बीमारी पैदा करने की प्रॉपर्टी लॉस कर चुका। जब हम प्रॉपर्टी कहते हैं तो जो वायरस है वो न्यूक्लियोटाइड्स, जो या तो आरएनए के या डीएनए के, इस केस में कोरोना में आरएनए वायरस है जिसमें करीब 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स है, और इनमें कोई भी चेंज होगा 30,000 न्यूक्लियोटाइड में तो उसको हम म्यूटेशन कहेंगे, और वो नया वायरस या नया स्ट्रेन जिसको कहलाएंगे, नया वायरस भी अगर नहीं कहे तो नया स्ट्रेन कहेंगे। और इसीलिए ये जो चेंज है इन न्यूक्लियोटाइड में वो वातावरण के अनुसार हो सकता है, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अनुसार हो सकता है, जो हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस है उसके अनुसार, तो मैनी रीजन्स। और जब ये एनिमल्स पे हमारा सफल प्रयोग होता है तब ये ह्यूमन बीइंग पे आता है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर, जो लो डोज उसमें इंजेक्ट करके उसमें सिम्टम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसकी जो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज है, वो उसके रेस्पॉन्स में क्या रेस्पॉन्स देती हैं, कितना ज्यादा बनना शुरू होती हैं, इस सब का मेजरमेंट होता है। फिर डबल डोज करके इस तरह से प्रोसेस चलता है, इसीलिए इट टेक्स टाइम। इसमें तो क्योंकि कई देश लगे हुए हैं, बिकॉज इट इज सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन टू ह्यूमन बीइंग्स, तो इसलिए many countries are looking for the vaccine। और दूसरा इसका इनडायरेक्ट अदर प्रॉफिट ये भी होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन बनाने में, वैक्सीन खोज में बहुत पैसा भी खर्च होता है, तो उसका इनकम भी होनी चाहिए। ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि एनी स्टडी विच वी कॉल इट अप्लाइड इज रिलेटेड टू बिजनेस। ये हमें बहुत ही सोच की बात है, क्योंकि जो बेसिक रिसर्च है या बेसिक जो हमारी स्टडी है किसी भी सब्जेक्ट की, वो एक बेसिक ज्ञान देती है उसके बारे में। जैसे बेसिक जूलॉजी हमारे यहाँ सब जगह एक सब्जेक्ट है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। अभी अप्लाइड जूलॉजी सब्जेक्ट अलग से हमारे प्रदेश में नहीं है, जूलॉजी है, उसी के अंतर्गत हम अप्लाइड जूलॉजी के कुछ पेपर्स कोर्सेस इंक्लूड करते हैं। तो बेसिक नॉलेज उसके अबाउट मॉर्फोलॉजी, उसके किसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि वर्टिब्रेट है, नॉन वर्टिब्रेट, कॉर्डेट, मतलब उसके किस तरह का है, इतना बड़ा एरिया है। फिर उसकी क्या फिजियोलॉजी है और उनके अलग अलग स्टडी करना, तो यही बहुत समय ले लेता। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अप्लाइड जूलॉजी एक सब्जेक्ट खोला हुआ है, उस अप्लाइड जूलॉजी में भी उन्होंने डिफरेंट जो एरियाज हैं उन पर एम्फेसिस दी हुई है। कुछ अप्लाइड जूलॉजी के पार्ट हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने ले लिए हैं, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप से संबंधित पेस्ट वगैरह से हैं, और इस तरह से
जूलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी पार्ट भी बन गया है। और इस तरह से इसमें इस पढ़ने वाले बच्चों के लिए जॉब भी बहुत मल्टीफेसिट है, बहुत तरह के जॉब्स है। और सबसे पहला जॉब तो जो बेसिक साइंस की बेसिक नॉलेज का होता है वो टीचर से संबंधित, स्कूल टीचर, कॉलेज में जूलॉजी पढ़ करके, यूनिवर्सिटी में जूलॉजी पढ़ करके, वो सबसे ज्यादा जो जूलॉजी जॉब का अगर हम देखें ग्रोथ, इट वेरीज फ्रॉम 6 to 15% इन डिफरेंट स्फीयर। साइंटिस्ट का जॉब पहले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता था, आजकल वो बायोडाइवर्सिटिकल स्टडीज में आ गया है। तो उसमें साइंटिस्ट के जॉब बहुत निकलते थे अलग अलग एरिया में, रीजनल ऑफिस और उसके हेडक्वार्टर कलकत्ता में। दूसरा, जो एनिमल्स पेट रखते हैं बहुत, अभी धीरे धीरे इंडिया में भी इसकी हॉबी आ रही है, उसकी केयर टेकर के लिए जूलॉजिस्ट थोड़ा सा हेल्थ केयर का कोर्स करके उसमें जॉब पा जाते हैं। और दूसरा यह है कि इसके जो अप्लाइड पार्ट है वो जॉब इससे रिलेटेड है, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नीशियन से या लैब अपनी एस्टेब्लिश करने से, अगर थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का उन्होंने सीख लिए हैं टेक्निक्स, तो मेजरिंग शुगर और जो हीमोग्लोबिन एटसेट्रा ये सब वो कर लेते हैं। या जैसे इसमें भी थोड़ी सी वैक्सीन डेवलप करने में भी वो हेल्प करते हैं, एनिमल मेंटेनेंस में, जहां वेटरनरियंस एंड जूलॉजिस्ट दोनों ही जॉब पाते हैं। तो इसलिए जॉब इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट एरियाज में जूलॉजिस्ट को मिल जाता है, बेसिक जूलॉजी के साथ और अप्लाइड जूलॉजी के साथ। अब अगर हम कहें कि जूलॉजी का जो बैकग्राउंड आते आते अब रिसर्च एरिया में भी in so many new areas related to applied zoology have emerged, particularly in molecular aspects, cell biology, molecular genetics. Now especially on the genomics and from genomics to proteomics. यानी हम इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में ऐसे समझ ले कि जो हमारे अंदर सेल के अंदर जो क्रोमोजोम है और उसका जो डीएनए है, उसमें जीन है, उसमें बेस पेयर है, जीन जिसको कहते हैं न्यूक्लियर, उनका जो सीक्वेंस है वो डिटरमिन करता है कि कौन सी प्रोटीन बननी चाहिए जो हमें गुण देती है। कोई सफेद रंग का है, कोई काले रंग का है, किसी को बीमारी जल्दी होती है, किसी को बीमारी देर से होती है, किसी की आंखें में चश्मा जैसे हमारे लगा हुआ है जल्दी लग जाता है, किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, कोई कम उम्र में ही बूढ़ा लगने लगता है, एजिंग फैक्टर जिसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत से ह्यूमन से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, और इन सब की एप्लीकेशन जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स जो नई ब्रांच अभी आ रही है, बहुत रिसर्च हो रहा है, ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम कहें कि इन दिस सेंचुरी विच इज द मोस्ट अप्लाइड रिसर्च जिसने बहुत एरिया खोल दिया, तो हम कहेंगे ह्यूमन जीनोमिक्स, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, जो 1984-5 में कंसीव हुआ। इसका आइडिया 1990 से शुरू हुआ। करीब 20 ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कंट्रीज की, खासतौर से यूरोप और अमेरिका की, और मेनली अमेरिका से फंडिंग हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका ने भी फंडिंग की, यूनेस्को ने की, यूके ने फंडिंग की, एनजीओ ने की, और अल्टीमेटली 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया गया। जब हम इसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, का मतलब जो हमारे अंदर क्रोमोजोम्स है उनका, उसमें तो करीब 3 बिलियन ऐसे तो बेस पेयर्स है, लेकिन सबका
स्टडी करना तो बहुत लंबा समय और बड़ा मुश्किल कार्य था, लेकिन ज्यादातर उसको लेकर के कि जो प्रोटीन बनाते हैं, जो गुण बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, उनकी स्टडी करने में, जो कि हमको पता करेंगे कि कैसे बीमारी होती है और उन बीमारियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं जीन थेरेपी से, उन सबको ये ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट के अंदर और खास तौर से करीब हम कह सकते हैं 92% जो 23,600 इस तरह का जो था, उसी का डिटेल स्टडी हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो इस तरह की जो ह्यूमन जीन का जो प्रोजेक्ट था बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई नई एरियाज खुल गई और इसमें जो सबसे ज्यादा यूक्रोमेटिक ह्यूमन जीनोम था वो तो करीब करीब 99.99% उसका जीनोम एनालिसिस हो गया। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स जीनोम था, जैसा मैंने कहा, करीब 8% वो रह गया और अभी हमको मालूम नहीं कि उसके अंदर कौन से ऐसे जीन हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका भी धीरे धीरे पता चलेगा। अब इनकी एप्लीकेशन देखिए, आपने सुना होगा 2000 के आसपास डॉली, एक जैसे दो भेड़ के बच्चे, इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हो गए। लेकिन अब जब ह्यूमन जीनोम पता चल गया तो लोगों को डर होने लगा कि कभी ऐसा ना हो कि हम इसके ह्यूमन लैब में उसी सिद्धांत के ऊपर पैदा करने लगे। तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी साइंटिफिक स्टडीज हो, जब उसकी एप्लीकेशन की बात आती है, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द सोशल एस्पेक्ट्स या एथिकल वैल्यूज जिसको हम कहते हैं, कि वो उनको ना लाएं। लेकिन इसकी एप्लीकेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिनको बच्चे नहीं होते थे, वो होने लगी इस टेक्नोलॉजी की। और इससे जो नई मेडिसिन जीनोम से नया मेडिकेशन का एक ब्रांच डेवलप हो गई और जीन थेरेपी शुरू हुई। एग्रीकल्चर में बहुत इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनने लगे, एनिमल बनने लगे, जो आप जानते हैं कि उसमें स्टेम बोरर, इसमें कपास में और हमारे ब्रिंजल में बहुत बड़ी लॉस करता था। तो वो उसको बैक्टीरिया मॉडिफाइड जेनेटिफाइड करके उसमें देने से उसका कंट्रोल हो गया। तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन हुआ। एनिमल हस्बेंड्री में जल्दी तेजी से बढ़ने वाले ऐसे एनिमल्स, चिकन वगैरह, जो पहले मान लो 5-6 महीने लेते थे, अब 2 महीने में ही तैयार किए जा सके, ऐसे में, या और हेल्दी एनिमल्स, तरह तरह के एनिमल्स, कोई भेड़िया जैसा दिखाई दे, कोई छोटा सा सुंदर सा गिनी पिग जैसा ही दिखाई दे। तो ये सारी चीजें जो है, जो एनिमल हस्बेंड्री, बायो प्रोसेसिंग, इसके जीनोम को यूज करके ऐसे सुपर बैक्टीरिया या उस तरह से बनाए गए जो कि जल्दी से वेस्ट मटेरियल को समाप्त कर दें और पानी को फिर शुद्ध कर दें, या हैवी मेटल्स या जो केमिकल का पोल्यूशन हुआ उसको दूर कर दें। और इस तरह से रिस्क असेसमेंट वगैरह में इसका यूज हुआ। बायो आर्कियोलॉजी में जो हमारी दीवारें पुराने मंदिरों की आपने देखा होगा वो नष्ट होने लगती हैं, पुराने फोटोग्राफ, पुराने हमारे लिटरेचर, उन सबको कंट्रोल करने में इसका। और इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उस जीन के सीक्वेंसिंग से और एनिमल्स के जीन के उससे लेकर के
और इस तरह से जीन बैंक वगैरह का विकास हुआ। बाहर के देश में NCBI वगैरह जीन बैंक है, जहां पर कि कोई भी जीनोम का जो भी सीक्वेंस होता है। और अब कई हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, खास तौर से ई कोलाई और इस तरह के जो ईस्ट वगैरह है, जिनका पूरा जीनोम मालूम है, पूरे उनके एक एक न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर का जो कैरेक्टर है वो मालूम है। इसलिए उसी के टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नॉन उसमें जीन का पार्ट इंट्रोड्यूस करके उसको उस टेक्नोलॉजी को यूज करते। तो जूलॉजिकल स्टडी एक तो ये नए एरियाज जो इमर्ज हुए उसमें बहुत फायदा की। और जैसा अभी आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन में भी एनिमल नॉलेज और उसमें जूलॉजी के जो लोग हैं, सेल कल्चर जो हमारे अभी कैंसर का कंट्रोल पूरी तरह से नहीं मालूम, उसके ऊपर भी जो अलग अलग सेल लाइन है कैंसर की, उनको कल्चर करना, उनके ऊपर सेल डिवीजन, उनके ऊपर मेडिसिन और प्लांट एक्सट्रैक्ट या जो और भी एस्पेक्ट्स है ऑन्कोलॉजी में, उनके सब की स्टडी। ये सब चीजें हमारी जनरल समय की हैं। लेकिन आज हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि इस कोविड-19 ने एक फियर क्रिएट की हुई है सभी के दिमाग में। खास तौर से इतनी बड़ी संख्या में पहली बार हिस्ट्री में, फॉर द फर्स्ट टाइम, रिटर्निंग ऑफ माइग्रेटरी लेबर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज टू देयर होम टाउन और टू विलेज। ये पहली बार ऐसी घटना हुई। इस घटना ने सबको हिला दिया और सभी अब प्रदेश ये सोच रहे हैं कि अब ये लेबर जाना भी मुश्किल है वापस, और वो चाहती है अपने परिवार के साथ रहे, कुछ छोटा मोटा यही नौकरी करे। उसमें पढ़े लिखे भी बच्चे हैं जो गए हुए हैं वहां पर, अलग अलग जॉब में वो जॉब कर रहे थे। तो ऐसे समय में जूलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, ये हमारे लिए एक चैलेंज की बात है। अब इस चैलेंज को कॉलेज भी या यूनिवर्सिटी भी कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी एक बहुत जरूरी है इसको समझना। तो अब इस एस्पेक्ट पे अगर हम लें तो दो चीजें आती है कि एक, एप्लाइड जूलॉजी का यूज करके हम ऐसे जॉब क्रिएट करें जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक या कहें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो। दूसरा, बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत ना हो, छोटे स्तर पर शुरू करें और बाद में धीरे धीरे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा 10-12 हजार रुपए अगर महीने का घर बैठे ही इससे अर्न होने लगे, 10-15 हजार रुपए, तो हम क्यों बाहर जाएं। तो हम अपनी कल्चर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने घर परिवार वालों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स है, ऐसे एरिया है जिसमें अप्लाइड जूलॉजी हेल्प कर सकती है, और कॉलेज उसमें बहुत हेल्प कर सकता है इस पीरियड में। और कॉलेज भी जो नए पूछती है इनोवेशन, उसमें भी अपने को इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है। वो अपॉर्चुनिटी होगी स्टार्टअप शुरू करने में, जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप। स्टार्टअप वो स्टेज है जो कि आगे चल कर के अच्छा बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सकती है। तो कुछ एरियाज में डिस्कस करूंगा क्योंकि हमारे उन एरियाज में डिटेल एक्सपर्ट्स है, वो आपको बताएंगे। सबसे आसान और इस छत्तीसगढ़ के लिए रिलीवेंट, क्योंकि छत्तीसगढ़ इज हैविंग अबाउट 44% फॉरेस्ट, मिक्स्ड फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट, देन
अचानक मार का बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट, so many forest area, one of the largest in our country, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Northeast, especially Arunachal. These are the main forested area. So to use this, because in these forested area, the flowering takes place in different season. और इस flowering को use करने के लिए we can think of apiculture या bee keeping जिसको कहते हैं। और ये bee keeping बहुत अपने छोटी सी जगह किसी का है, घर है, उसमें भी 2-4 उनसे बॉक्स से शुरू की जा सकती है। बहुत ज्यादा पैसा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि बॉक्स अवेलेबल कराने के लिए भारत सरकार ने, इंडिया ने खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा वो बॉक्स अवेलेबल कराते हैं। और रानी भी, क्वीन भी मिल जाती है कुछ जो वर्कर्स के साथ में। उसको अगर हम रख देंगे तो हमारी कंटिन्यूअस मंथली 4-5 किलो से लेकर के 7-8 किलो, डिपेंड करता है कि किस तरह की क्वीन है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस होती है जूलॉजिस्ट की, कि देखिए इस तरह के कार्य तो नॉन जूलॉजिस्ट भी शुरू करते हैं, लेकिन जूलॉजिस्ट होने के नाते उसको पता रहता है बी का मूवमेंट, बी के ऊपर कोई डिसीज आ रही है, बी के ऊपर भी कोई पेस्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वास्प उसका एक एनिमी है। तो इन सबको जूलॉजिस्ट अच्छी तरह से समय पर पहचान सकता है और उसके अच्छी तरह से केयर कर सकता है। ऐसे हमारे कई मित्र हैं जिन्होंने अपने जॉब के साथ साथ ये बी कीपिंग का साइड बिजनेस शुरू किया और आज उनकी इनकम, जो उनकी सैलरी है, उससे ज्यादा है। तो इसके लिए कॉलेज थोड़ी सी 5-6 दिन की एक ट्रेनिंग का अगर कार्य करे और अपने कॉलेज में भी बी कीपिंग के बॉक्स वगैरह मेंटेन कर लें। और देखिए बिना कुछ खर्चे किए जो बी है वो लाती रहेंगी शहद फूलों से हर सीजन में। बस टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा बचाना है। वैसे तो यहाँ छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं होती। और आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली उससे आपको प्योर हनी मिलेगा। कई जगह जो फ्लावरिंग आती है, जैसे मेघालय वगैरह में, चिरापुंजी एरिया में ऑरेंजेस बहुत होते हैं, जैसे नागपुर में, और वहां पर उन्होंने रामाकृष्ण मिशन ने हनी के लिए बॉक्स प्रोवाइड किए और ऑरेंज हनी के नाम से मिलता है। बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू उसकी होती है और कॉस्ट भी ज्यादा होती है। यहाँ पर गर्मियों में आप देखते हैं कि आम के इतने बगीचे हैं, तो मैंगो हनी मिल सकती है उस बीच में, क्योंकि दो एक महीने उनकी फ्लावरिंग रहती है। जनवरी फरवरी से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये बहुत ही एक अच्छा शुरुआत और अपना जो ये समय है उसका यूटिलाइजेशन स्टूडेंट कर सकते और अपने को हताश ना फील करके प्रोडक्टिव बना सकते। क्योंकि अभी एग्जाम नहीं होने की वजह से उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर जो है उसको डाइवर्ट करना एक सबसे बड़ा हमारा कार्य और चुनौती है। इस चुनौती से ही मिलना, उसको सुलझाना हमारे शिक्षा संस्थाओं के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो अभी डॉक्टर सुधीर शर्मा जी कह रहे थे, वो हमारे विश्वविद्यालय की स्ट्रेंथ, हमारे कॉलेज है, करीब 200 कॉलेज हमारे हैं। अगर 5 जिले में कुछ ऐसे स्टार्टअप हमारे कॉलेज शुरू करेंगे अपने अपने क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र विकसित होगा। और जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहती है कि क्षेत्र विकसित हो, वहां के रिसोर्सेज को लेकर के, एनिमल्स को लेकर के, तो जूलॉजी के स्टूडेंट्स उसमें बहुत अपना कारगर सहयोग दे सकते हैं।
दूसरा बहुत छोटे स्तर पर कार्य जो जूलॉजिस्ट कर सकते हैं वो अप्लाइड ब्रांच है ऑर्नामेंटल फिश की ब्रीडिंग सीखना, क्योंकि हमको बहुत छोटी छोटी कलरफुल अलग अलग तरह के फिश बहुत पसंद होती है। और यहाँ जब फिशरीज वाले जब नेचुरल वाटर से फिश कलेक्ट करते हैं तो वो छोटी फिश को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट में तो ऑर्नामेंटल फिश के ऊपर स्टडी हुआ और 120 से ज्यादा स्पेसीज हैं। अब मुझे यहाँ मालूम नहीं कि यहाँ हमारे जो फिशरीज डिपार्टमेंट है या जूलॉजी के जो फिशरीज के स्पेशलाइज्ड टीचर है उन्होंने कुछ स्टडी की है या नहीं, लेकिन वो देखेंगे कि यहाँ पर भी कई ऑर्नामेंटल फिश मिल जाएंगी। और इस तरह से अपने कॉलेज में एक्वेरियम डेवलप करना, उनकी फीडिंग, उनकी मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये भी छोटी सी ट्रेनिंग होगी 5-7 दिन की। तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी ट्रेनिंग दे करके हम जूलॉजी की किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं टू जनरेट आवर ओन जॉब। क्योंकि हमारे लिए अब ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो माइग्रेटरी पीपल 5 लाख या उससे ज्यादा आए हैं उनके लिए भी कैसे हम कुछ अल्टरनेटिव ऐसा जॉब बनाएं जो कि वो अपने ही प्रदेश में रह करके इसकी प्रोग्रेस में शामिल हो। और इस तरह से उसका जो फीड है या मेंटेनेंस है या जो भी डेवलप करना है वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जब वो जूलॉजी के खुद ही स्टूडेंट है तो नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कौन सी एल्गी ज्यादा अच्छा प्रोटीन देती है तो एल्गी कल्चर भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत एल्गी यहाँ पर ट्रॉपिकल कंडीशन होने से मिलती है, उसका भी साइड कल्चर कर सकते हैं। तीसरा, छोटे स्तर पर एक्वा कल्चर। यहाँ पर जगह जगह घरों में भी बहुत छोटे छोटे पॉन्ड्स, तालाब बने हुए हैं। अगर पॉन्ड्स नहीं भी हैं किसी के यहाँ तो टब ले लें और उस टब में भी हम सीख सकते हैं कि उसमें अगर टब नहीं लेते तो कम से कम हम थोड़ा सा एक पॉन्ड टाइप का डेवलप कर सकते हैं, कुछ फीट लंबा, 6-7 फीट और 2-3 फीट चौड़ा और करीब 3-4 फीट गहरा। और उसमें पानी भर के जो फिशलिंग्स हैं, खास तौर से जो बहुत तेजी से बढ़ने वाली फिश है, खास तौर से जो कार्प्स है, रोहू है, कटला है, ये स्पेसीज बहुत तेजी से बढ़ती है, इनको भी ग्रो कर सकते हैं और बाद में अपना बड़े स्तर पर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अभी बरसात का समय रहता है, बहुत तालाब भर जाते हैं और उन तालाबों में ये समय ऐसा है कि अक्टूबर तक हमको काफी अच्छी क्रॉप दे सकते हैं। तो इसको भी सीखने के लिए, क्योंकि अभी डिटेल बताएंगे, एक एक्सपर्ट भी है फिशरीज इंस्टीट्यूट से, मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिशरीज के साथ साथ इसमें बहुत सी जो ओस्टर का है, मोती पालन की जो वो है पर्ल, बहुत बड़ी इंडस्ट्री से निकली है, खासतौर से जो उड़ीसा में और जो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और जो इसका उड़ीसा में जो फ्रेश वाटर पर्ल ग्रोइंग ओस्टर वगैरह पर बहुत कार्य हो रहा है और वो बहुत अच्छा बिजनेस है। तो वो यहाँ पर अभी किसी ने शुरू नहीं किया, तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो वाटर पीएच वगैरह है वो बहुत अच्छी है और इस तरह से उसको भी अच्छे वो ले सकते हैं। और क्योंकि ये इनकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है, इसलिए फिश कल्चर बहुत जल्दी हमको रिटर्न देने लगता है। नेक्स्ट जो छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है और हमारे जूलॉजी के स्टूडेंट शुरू कर सकते हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। आपने देखा है कि अब आजकल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बहुत डिमांड हो रही है और उसकी कॉस्ट 2 गुना से लेकर 4 गुने तक उस प्रोडक्ट की है जो इनऑर्गेनिकली या केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा पैदा किया गया है। तो उस ऑर्गेनिक कल्चर के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर चाहिए
और ऑर्गेनिक मैन्योर अगर हम नेचुरल वे में बनने के लिए छोड़ें तो 1 साल 1.5 साल लग जाता है। जो काऊ डंग है या पत्तियां सड़ी गली या जो भी हमारा वेस्ट है किचन का, उस सबको कंपोस्ट में बदलने के लिए 1-1.5 साल लगता है नेचुरल वे में। तो इसका भी छोटे स्तर पर पहले बीन बना करके 3 फीट की लंबाई का, 1.5 फीट चौड़ा और 8-10 इंच गहरा, क्योंकि ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, उसमें हम नीचे प्लास्टिक वगैरह लगा करके और कुछ न्यूज़पेपर, कुछ पत्तियां सड़ी गली किचन के अपने जो सड़ी गली चीजें हैं, गोबर है, उन सबको डाल के वर्म्स डाल देते हैं। और वर्म्स के भी कई स्पीसीज आ गई हैं, खास तौर से रेड वर्म जो आया है और जो रिंकल्ड वर्म है, जो कि ये माना जाता है कि बहुत ही तेजी से उसको कचरे को खाद में कन्वर्ट कर देता है। तो जो जूलॉजिस्ट हैं वो उसका जूलॉजिकल नाम भी जानते हैं और कह सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज, वो पहचान भी उनको रहती है। जो जूलॉजी के नहीं है उनको पहचान भी नहीं होगी। और आजकल वर्म्स, अर्थवर्म्स जो है ये बिकते हैं, आप इनको लेकर के, और इस तरह से देखेंगे कि जो अच्छे वर्म्स हैं वो बहुत तेजी से 2 महीने में, यानी कि 8-10 हफ्ते में ही वो हमारा कंपोस्ट तैयार कर देते हैं और उनकी वो साइकिल करते रहते हैं। तो साइकिल करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए आप कई बीन्स भी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि कंटिन्यूअस भी वर्मी कंपोस्ट मिलती रहे। और इस तरह से शहर में जिनको कि कंपोस्ट मिलना मुश्किल हो सकता है, उसके अच्छा खासा एक काउंटर दे करके मिल सकता है, सप्लाई हो सकती है। एक काउंटर पर रख सकते हैं, अपना काउंटर खोलने की जरूरत नहीं, एक काउंटर लेकर के, और इस तरह से इसको भी हम एक छोटे रूप में शुरू कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक्वाकल्चर हुआ, आपका जो है ऑर्नामेंटल फिश का एक्वेरियम हुआ, या हमारा ये कंपोस्टिंग का हुआ, ये छोटे स्तर पर हो सकता है, इसको ज्यादा बड़े स्तर की जरूरत नहीं है। और ये कोविड-19 में हमें एक अल्टरनेटिव तैयारी हो सकती है। और कॉलेज में भी इसके हम स्टार्टअप छोटे छोटे उसके डिमोन्स्ट्रेशन के लिए बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम उनको प्रैक्टिकली इंटरप्रेन्योरशिप का एक अलग से सर्टिफिकेट 1 वीक का या 2 वीक का देते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जर्मनी से भी जुड़ गए, लखनऊ से भी जुड़ गए, भोपाल से भी जुड़ गए, अलग अलग जगह से जुड़ गए। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस स्तर का करना बहुत ही मुश्किल होता। तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को कोविड-19 में हम ऐसी ट्रेनिंग देने में यूज करें, जिससे कि छोटे स्तर पर ही स्टूडेंट अपना देख सकते हैं कि उसकी इकोनॉमिक्स एनालाइज कर सकते हैं कि कितना हमारा खर्च इसमें हुआ, और अल्टीमेटली फाइनल नेट प्रोडक्ट जो निकला और नेट प्रॉफिट कितना हुआ, वो खुद एनालाइज करके और फिर आगे वो प्लान कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस तरह से जूलॉजी का छोटे स्तर से भी शुरू करके वो स्टूडेंट बहुत ही प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अब इससे बड़ा, जैसे मैंने कहा, एनिमल केयर वगैरह का भी वो कर सकते हैं, अपने ब्रीड तैयार कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स के ब्रीड और ये सब की बहुत डिमांड है और बड़े कॉस्टली मिलते हैं। ये जूलॉजिस्ट इस काम को भी कर सकते हैं। अब इससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो बहुत अच्छे एरिया है, पोल्ट्री का है। पोल्ट्री एरिया मोस्ट फास्ट डेवलपिंग है इंडिया में भी। कई बिलियन पोल्ट्रीज पर डे यूज होती हैं, उनके एग या मीट उनके यूज होते हैं। और अब ऐसी ऐसी वैरायटीज डेवलप हो गई हैं कि जो बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी एग देना शुरू कर देती हैं
और जब वो एग कम करती हैं देना तो उनको मार्केट में डिस्पोज कर देते हैं, बिक्री कर देते हैं। तो इस तरह से रिसाइकिल जो मनी का है वो बहुत फास्ट है। पोल्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी से प्रॉफिट होने वाला एक वो है, लेकिन इसमें केयरफुल रहना है कि इसके साथ बहुत सी डिसीज भी आती है। जैसे आपने देखा 2 साल पहले बर्ड फ्लू आई थी, उसमें बहुत हमारे जो पोल्ट्रीज के थे चिकन और इस तरह से नष्ट हो गए थे, मर गए थे। तो इसका भी ध्यान जूलॉजिस्ट अगर है तो उसको पहले ही पता चल जाएगा देख करके अपने बर्ड्स को कि कहाँ पर बीमारी है, और इस तरह से वो ज्यादा अधिक केयर लेगा और उसका जो प्रॉफिट होगा एक साइंटिफिक वे में होगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि वो जो उसके इवन वेस्ट है उसको कंपोस्टिंग के लिए दे करके, क्योंकि उसमें बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं, और जो वो फीड यूज करेगा वो भी ऐसा फीड यूज करेगा जैसे यहाँ पर राइस इतना ग्रो होता है, हमारा वेस्ट भी जाता है बाहर रखने के लिए, उस वेस्ट राइस को लेकर के फीड के रूप में भी काम आ सकते हैं जो उगा हुआ राइस है। और जो हस्क है राइस की वो भी फीड में काम आती है। तो इस तरह से सस्ता फीड यूज करके उससे अच्छा, जिसको हम कहेंगे कि प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो जूलॉजिस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करें। जो दूसरा इमर्जिंग एरिया है वो है डेयरी फार्म। ये बड़े उस पर है, छोटे स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जमीन होनी चाहिए। शहर के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ग्रामीण आंचल के बच्चे हैं जिनके पास में घर में जमीन होगी वो छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं 4-5 एनिमल से। और अब गवर्नमेंट की जो साइट है वहां पर आप अच्छी नस्ल के, अच्छी वैरायटी जो 15-20 लीटर से लेकर 40 लीटर तक दूध देती हैं, ऐसी गाय और भैंस हैं, मुर्रा भैंस वगैरह, जो आप ले सकते हैं। और 5 एनिमल से शुरू करते हैं तो 50,000 से लेकर के 60,000 रुपए महीने की इनकम हो सकती है। ऐसी स्टडी हो चुकी है, इकोनॉमिकल स्टडी इसके ऊपर। तो देखिए, क्योंकि इंडिया इज फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, जो वर्ल्ड का नियरली 19% मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है, लेकिन इंडिया के अधिकतर जो एनिमल्स हैं, काउज और बफेलोज, वो बहुत कम मिल्क देते हैं, तो वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होते। इसलिए आपने देखा है कि जब दूध देना बंद कर देते हैं गाय भैंस तो बहुत से लोग बाहर छोड़ देते हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो गौठान की स्कीम चलाई है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे वहां पर उनको गोबर इकट्ठा करके बायोगैस भी बन सकती है, उससे कंपोस्ट करके जो ऑर्गेनिक ये कंपोस्ट फर्टिलाइजर भी बन सकता है। और इस तरह से हम अपने गवर्नमेंट की इस स्कीम में भी योगदान दे सकते हैं और अपने प्रदेश में पहले छोटे स्तर पर शुरू करें और फिर बड़े स्तर पर बहुत से देशों में पढ़े लिखे जो जूलॉजिस्ट हैं, एनिमल एजुकेशन लिए हुए हैं, उन्होंने अपनी प्राइवेट डेयरी खोली हुई है। तो उन्होंने 100-200 एनिमल्स इस तरह से काउज या बफेलोज रख करके, और उसके बहुत से प्रोडक्ट, पनीर है, आपने देखा अमूल हमारे देश में इतना सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है। जब ये अमूल नहीं थी और कोरियन साहब ने देखा कि यहाँ पर गाय ऐसी हैं जो 1-1.5 लीटर 2 लीटर दूध देती हैं और उसका ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वहाँ कोऑपरेटिव और अमूल को स्थापित किया। आज अमूल से इतना प्रॉफिट हो रहा है पूरा, और वर्ल्ड को वो चुनौती दे रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके सामने टिक नहीं पा रही। तो आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबी भी बनने के लिए ये आगे चल के धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छा एक बिजनेस है।
और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि इसका हर प्रोडक्ट काम में आ जाता है। लेकिन इसको बिजनेस शुरू करने में आपको देखना होगा कि जब हमारे एनिमल्स कम दूध शुरू कर देते हैं देना, यानी 4-5 लीटर, तो आपको उनको विलेज में या किसी दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस में के हिसाब से इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इकोनॉमिकल नहीं होते। और इस तरह का बिजनेस हरियाणा और गुजरात में बहुत तेजी से फल फूल रहा है, बहुत तेजी से उसको ग्रोथ हो रही है। और उनके देखा जा रहा है कि इस डायरी से जिसके पास में करीब 30 ऐसी मुर्रा बफेलोज हैं, तो वो करीब 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम दे रहा है। क्योंकि बहुत लोगों को फैट फ्री मिल्क चाहिए, तो क्रीम निकल गई, दूध भी आपका बिक गया। चीज निकाल लिया, तब भी दूध बिक गया। उसका मक्खन निकाल लिया, तो उसके छाछ बिक गई। तरह तरह के प्रोडक्ट उससे निकाल करके कोई भी वेस्ट नहीं जा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोविड-19 में हमें अब सोचना होगा अल्टरनेटिव, हाउ टू मेक आवर स्टूडेंट मोर प्रोडक्टिव, applying their knowledge of zoology in making themselves to earn money, to become entrepreneur, and also to utilize the local resources, and in this way to participate in economic growth of the state and ultimately of the country. तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो और अधिक नए एरियाज बताएंगे और जरूर बताएंगे कि इस कोविड-19 के बीच में हम किस तरह से स्टूडेंट्स को खास तौर से ऐसा रास्ता दिखाएं जिनके अंदर से एग्जाम का भय खत्म हो, नौकरी का भय खत्म हो। क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल के ईयर एग्जाम दे करके पास हो करके दे विल सर्च जॉब। और अभी आपने जो देखा है, जो हमारे लेबर माइग्रेट किए हैं और नियरली 20% से 30% जॉब छूट गए हैं लोगों के, तो उनकी मेंटल जो कंडीशन है बड़ी वो है। और इस कोविड-19 इस सबको लेकर के जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बहुत असर डाला है। तो इसको अच्छी तरह से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने के लिए हम अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये जूलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। और इसमें कॉलेज के जो हमारे टीचर्स हैं जूलॉजी के, वो बहुत सहायक हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ट्रेनिंग दे सकते हैं और छोटे स्तर पर अपना एक्सपेरिमेंटल रूप में इनमें से कुछ चीजें शुरू करके देखें कि कौन सा हमारे लिए सुटेबल है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, और अपने इंटरेस्ट और जो लोकल नीड है उसके अनुसार वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब सेमिनार का जो उद्देश्य है उसका यही ऑब्जेक्टिव है, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन अप्लाइंग लर्निंग द नॉलेज so that we can become the self-sufficient, earning ourselves and creating our own entrepreneurship, own business, and therefore then we can say we have learned the skill to apply our knowledge. I once again thank and congratulate DLS College who has organized such an international 2 days e-conference where experts of different branches of zoology have been invited, and they will certainly give very important applied aspects of zoology knowledge to our students, to our scholars who can make use of their knowledge as well as improve their economical condition. Thank you very much. धन्यवाद सर।
हमारे वाइस चांसलर सर जी ने हमारे इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस विषय के चयन हमने क्यों किया, इस विषय में बहुत ही अच्छी और विस्तृत जानकारी दी। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमारे मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर बी.एन. पांडे सर जी उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ आगे के उद्बोधन के लिए। हमारे इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। आपके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर बी.एन. पांडे सर। मित्रों, मैं आज के इस वेबिनार में सर्वप्रथम इस वेबिनार की जो आयोजक हैं सुनीता द्विवेदी जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य रंजना चतुर्वेदी जी और इस कॉलेज के मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे लोग, इस प्रोग्राम से जितने भी लोग जुटे हुए हैं, और मैं अपने दो छोटे भाई प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा और प्रोफेसर शिवेश प्रताप सिंह सतना, इनका मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इन्होंने ही इस प्रोग्राम को मेट्रोलाइज किया है। मित्रों, आपने जो सेमिनार का चयन किया है ये वास्तव में अद्भुत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी जो विश्व जिस संकट से गुजर रहा है, मानवता के इतिहास में पहली बार इस तरह का संकट पूरे विश्व में कभी भी देखने को नहीं मिला था। उदाहरण के तौर पर आप धरती की बात लें तो धरती पे कोरोना और बाढ़, आसमान की बात लें तो आसमान में लोकस्ट जिसको टिड्डी आप कहते हैं, चाहे थंडर है या फिर क्लाउड ब्रस्ट है। पाताल की बात आप करें तो पाताल से लगातार आप देख रहे हैं कि भूकंप की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये परेशानी लोगों के सामने हो रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, और अगर समुद्र की बात लें तो लगातार साइक्लोन आ रहा है। कहाँ जाएं हम? धरती है, आसमान है, पाताल है, सब चीज बिल्कुल जहाँ भी मानव है ये बिल्कुल संकट के दौर से गुजर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में किसी के समझ में, चाहे वो साइंटिस्ट हों चाहे सुपर पावर हो, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका समाधान क्या निकालें, कैसे निकालें। और ये कुदरती तो है ही है, इसको बिल्कुल नेचुरल फिनोमेनन है, कोई भी आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। थोड़ा सा और आप विस्तार पर जाएं, इसके चलते क्या हुआ कि पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के चलते क्या हुआ परेशानी कि सारे फैक्ट्री बंद हो गए। जितने भी मजदूर दूसरे स्टेट में काम पर थे उनके सामने भूखमरी की समस्या आ गई, उनको लोगों ने नेगलेक्ट करना शुरू किया, तो किसी तरह से करके गवर्नमेंट के प्रयास से उन लोगों को अपने घर पहुंचाया गया। अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ, जिसको कहते हैं लॉक ऑफ वन, तो लॉक ऑफ वन की स्थिति ये है कि अगर फैक्ट्री है तो वहाँ मजदूर नहीं है, जहाँ मजदूर अपने गांव में गए तो वहाँ फैक्ट्री नहीं है। लोगों के सामने भूखमरी की समस्या आ गई और एक तरह से कहे कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट हो गया। आप देख रहे हैं कि शेयर बाजार नीचे उतर गया, लोग कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे जिंदगी बिताएं, ये सारी समस्या लोगों के सामने है। मित्रों, ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि हमारे सामने होप का किरण लेकर के एनिमल साइंस आ रहा है, खास करके अप्लाइड एनिमल साइंस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरे मानवता की रक्षा कर सकता है, मानवता को भोजन दे सकता है, मानवता को वस्त्र दे सकता है, मानवता को लाइवलीहुड दे सकता है, मानवता को दवा दे सकता है। जितनी भी तरह की आवश्यकता मनुष्य की है, सारी आवश्यकताओं की ये पूर्ति कर सकता है। इसलिए मैं इसके विभिन्न आयामों पर आपको बताना चाहता हूं कि इस संकट के समय में ये हमारा जो अप्लाइड एनिमल साइंस है ये कैसे हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। मित्रों, वैसे ये सब्जेक्ट काफ़ी व्यापक है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे 14-15 एस्पेक्ट मैंने आइडेंटिफाई किया है। पहला है एक्वाकल्चर या फिश कल्चर, फिर एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैग कल्चर, पर्ल कल्चर,
पोल्ट्री है, ऊल कल्चर, इस तरह से करके आप देखेंगे पिगरी है, गोटरी है, डकरी है। इस तरह से आप देखेंगे 14-15 ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। खास करके स्वामीनाथन साहब ने, ये वो जनरल प्रेसिडेंट साइंस कांग्रेस के थे, तो वाल्टियर में उन्होंने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का एक प्रस्ताव दिया था। मैं समझता हूँ कि आज के समय में वह बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि जब तक हम ग्रामीण स्तर पर रोजगार मुहैया नहीं कराएंगे, लोगों को इकोनॉमिकली मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए ये 14-15 जो अप्लाइड एनिमल साइंसेस हैं, इसमें ये क्षमता है कि ये करीब करीब पूरे वर्ल्ड की आधी आबादी, मतलब लगभग 3 लोगों को रोजगार दे सकता है। अब मैं एक एस्पेक्ट खाली आपको लेना चाहता हूं, आप फिशरीज ले लें। अब फिशरी इतना व्यापक सब्जेक्ट है कि आप उसमें आप देखेंगे कि एक्वाकल्चर तो है ही है, स्टोराइन कल्चर है, इनलैंड कल्चर है, पॉन्ड कल्चर है, कंपोजिट फिश फार्मिंग है, मोनो कल्चर है, केज कल्चर है, लेक कल्चर, केज कल्चर है, पेन कल्चर है, सीवेज फिशरीज है, कोल्ड वाटर फिशरीज है, स्टोराइन फिशरीज है, मेराइन फिशरीज है। इस तरह से आप देखेंगे कि इतने व्यापक स्तर पर यह फैला हुआ है। और अगर मैं इसका जिक्र लूं तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का अगर मैं आंकड़ा लूं तो हिंदुस्तान में करीब करीब इस सेक्टर में 14 से 15 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप एक शिफ्ट की बात ले लें, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर कोचीन में है, तो आप देखिए विभिन्न तरह के व्यंजन बना रहे हैं। वो मछली का अचार भी बना रहे हैं, मछली का केक भी बना रहे हैं, मछली का बिस्कुट भी बना रहे हैं, और सैकड़ों लोग, हजारों लोग की संख्या में लोग वो बिल्कुल एम्प्लॉयड है। और एक शक्तिवेल साहब हैं, उन्होंने एक नया आयाम दिया है एक्वाकल्चर का, दैट इज वीड कल्चर। समुद्र में पता नहीं हजारों वैरायटीज की वीड हैं, और उसमें से अधिकतर वीड जो है दे आर एडिबल। तो ये हमारे खाद्यान्न की समस्या को भी दूर कर सकता है। तो ये जो फिशरीज का सेक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और अगर इसको हम लेकर के चलें तो ये हमारे रोजगार और एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी समस्या का समाधान कर सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक विलेज है कैकलूर, जो कि विजयवाड़ा के आसपास है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ पहले वहाँ गया था, और मैं वहाँ की व्यवस्था देख करके बिल्कुल विभोर हो गया। तो एक छोटा सा गांव है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है कि सारे एग्रीकल्चर को कन्वर्ट कर दिया है फिश पॉन्ड में। प्रतिदिन वहाँ से 30 ट्रक कलकत्ता रोज आते हैं। अगर एक ट्रक में 3 एम्प्लॉय भी है, ड्राइवर खलासी लेकर के, तो 100 आदमी बिल्कुल प्रतिदिन का उनका रोजगार है। दूसरा है कि जब मछली आ रहे हैं तो उसको सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बास्केट में रखते हैं, हम लोग बनाते हैं बांस का खचिया। तो 1-2 फैक्ट्री लग गई उस गांव में जो कि बांस का खचिया बनाता है। अब बांस के खचिया में अगर मछली आएगा तो उसको सील करने के लिए जूट, 1-2 जूट फैक्ट्री लग गई गांव के अगल बगल में, तो वो बांस बनाने में, जूट बनाने का काम किया। और कुछ आइस फैक्ट्री गांव के आसपास में लग गई, क्योंकि जो बर्फ उतनी दूर से, जो मछली उतनी दूर से आएंगे उसको बर्फ में हमको प्रिजर्व करना है, तो बर्फ हो गया। और जब ये व्यापक पैमाने पर हो रहा है तो कुछ इंडस्ट्री वहां लग गई जो फिर फूड बनाना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि छोटे से गांव में एक एक्वा कल्चर के चलते, पॉन्ड कल्चर के चलते, इंटेंसिव फिश फार्मिंग के चलते कितने ज्यादा कारखाने बन गए और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया। मित्रों, आप सिल्क कल्चर की बात कर रहे हैं तो इसके डिफरेंट आयाम है। सेरीकल्चर में आप देखेंगे मलबरी कल्चर है, एरी कल्चर है, मूंगा कल्चर है, तसरी कल्चर, तसर कल्चर है। ये डिफरेंट तरह के कल्चर्स हैं, और इसमें लाखों से संख्या में लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। इसको आप देख सकते हैं। लैग कल्चर की आप बात लें तो आप देखें कि शादी ब्याह में जो भी चूड़ी बनती है या बहुत से तरह के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो बिल्कुल लैग के चलते बन रहे हैं। तो लैग कल्चर में भी काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं। आप पोल्ट्री की बात कर लें तो पोल्ट्री में भी देखें, पोल्ट्री से आपको अंडा भी मिलता है, आपको मीट भी मिल रहा है, और पोल्ट्री के जो फीकल प्रोडक्ट होते हैं वो भोजन, सिल्क के जो फीकल प्रोडक्ट होते हैं वो भोजन बन जाते हैं पोल्ट्री के लिए। इस तरह से आप देखेंगे कि जितने ज़्यादा
हैं। आप कश्मीर सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ देखेंगे पश्मीना ऊल है, डिफरेंट तरह के सीप हैं, लोग भेड़ी पालन करते हैं और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट पाए चले जा रहे हैं। मित्रों, आप गोटरी की बात लें तो हमको दूध भी मिल रहा है, हमको मीट भी मिल रहा है। आप कैटल फार्मिंग की बात कर लें, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कैटल फार्मिंग, आप देखिए गाय से हम लोगों को दूध भी मिलता है, दूध से घी, पनीर, मक्खन, विभिन्न दही, पेड़ा, डिफरेंट तरह के हम लोग को खाने पीने के उपयोग मिल रहे हैं। और ये एक एक सेक्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। आप हरियाणा में देखें व्यापक पैमाने पर लोग फिश कल्चर भी शुरू कर रहे हैं, लोग डेयरी भी चला रहे हैं, लोग पोल्ट्री भी चला रहे हैं। तो आप देखिए, अब पर्ल कल्चर की बात लें, आप थोड़े से 30 दिन का ट्रेनिंग आप सीफा में जाकर के ले लें तो आज की स्थिति ये है कि एक रत्ती पर्ल जो है वो करीब करीब 200-250 रुपये का आता है। और उन लोगों ने क्या किया, हैदराबाद अब चले जाएं, आप किसी भी तरह का पर्ल पा सकते हैं, सिर्फ आपको बीज डालना है। अगर आप साईं बाबा का बीज डाल दें, माता दुर्गा का बीज डाल दें, गणेश जी का बीज डाल दें, तो आपको जो मोती मिलेगा वो गणेश जी के रूप में मिलेगा, माँ दुर्गा के रूप में मिलेगा और साईं बाबा के रूप में मिलेगा। जिस भी देवी देवता के रूप में आप चाहेंगे। हमारा साइंस इतना डेवलप कर गया है कि ये पर्ल कल्चर में भी काफ़ी लोग इम्प्लॉयड हैं। आप देखेंगे कि पर्ल में ऑर्नामेंट्स तो बनते ही हैं, ऑर्नामेंट्स के अलावे भी लोग अब डिफरेंट कलर दे रहे हैं। पर्ल का नॉर्मल जो है मिल्की वाइट होता है, लेकिन आप देखेंगे कि आप उसको लाल कलर का भी पर्ल मिल सकता है, येलो कलर का भी पर्ल मिल सकता है, ग्रीन कलर का, मतलब जिस तरह का आप चाहेंगे उस तरह का आप मोती हम लोग को उत्पादन करके दे सकते हैं। मित्रों, हमने अभी चर्चा की थी एपी कल्चर की, शहद तो है ही है, लेकिन आप देखेंगे जो हमारे बी का स्टिंग होता है उससे जो पॉइजन निकलते हैं, उस पॉइजन से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हम लोग को मिल रही हैं और उससे हम लोग को मोम भी मिलता है। तो कहीं भी आप देखेंगे कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं है। एक इंडस्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वह दूसरे इंडस्ट्री के लिए रिसोर्स के रूप में काम कर रहा है। मित्रों, इस तरह से आप देखेंगे लेदर इंडस्ट्री आप ले लें, लेदर हम लोगों को पशु से मिलता है, लेदर से जूते बनते हैं, पर्स बनते हैं, हमारे जैकेट्स बन रहे हैं, टोपी बन रहा है, दस्ताना बन रहा है, विभिन्न प्रकार के ड्रेस मिल रहे हैं और काफ़ी अधिक संख्या में ये टेक्नोलॉजी एडवांस कर गई है, काफ़ी अधिक संख्या में ये लेदर में है। आप देखेंगे कभी कभी शार्क का लेदर, हिरन का लेदर या कभी लायन टाइगर का लेदर। पुराने जमाने लोग के समय में लोग पूजा घर में भी रखते थे, ऊपर बैठ करके पूजा भी करते थे। तो मित्रों, अगर हम कोई भी स्टेट ये एनिमल जो अप्लाइड एनिमल साइंस का है, जो हमने अभी 15-16 आपको डिफरेंट एस्पेक्ट बतलाए हैं, हर एक का अनुपालन हो और फिशरीज के जो डिफरेंट आयाम है अगर इसका भी सही रूप से संबंधन हो तो एम्प्लॉयमेंट तो कोई समस्या ही नहीं है, बल्कि इसमें एम्प्लॉयमेंट के आयाम इतने अधिक हैं कि शायद उतने लोग हमको नहीं मिलेंगे जिनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। आज की परिस्थिति में देहात में जो लोग हैं ये अब शहर में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में उनकी जो स्थिति हुई वो उससे काफ़ी भयभीत है। इसीलिए ये अप्लाइड जूलॉजी एनिमल साइंस के माध्यम से हम लोगों को बहुत व्यापक पैमाने पर रोजगार को खड़ा करना है ग्रामीण इलाके में। आप जैसे मधुमक्खी की बात करते थे, मधुमक्खी में देखिए आज जिस तरह का
धन्यवाद पांडे सर। यहाँ पर इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन समारोह संपन्न होता है और अब टेक्निकल सेशन के लिए मैं राहुल शर्मा सर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज धामनोद, मध्य प्रदेश को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू राहुल सर। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पीएन पांडे सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। साथ में मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि पीएन पांडे सर से आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर बीएन पांडे सर नए आर्टिकल। राहुल सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। राहुल सर, आप थोड़ा सा माइक को सीधा रखेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अभी ऑडिबल है सर, आप आगे कंटिन्यू करिए। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर बीएन पांडे सर का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाके जूलॉजी के सेक्टर में, जहाँ हमने डिस्कस किया लेक कल्चर, एपीकल्चर, बी कीपिंग एंड मेनी मोर। मैं एक बात इसमें ऐड करना, बीएन पांडे सर से हम फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बीएन पांडे सर अलग अलग रिसर्चेस, अलग आर्टिकल्स को फेसबुक के माध्यम से शेयर करते हैं, जो हम जैसे न्यू स्कॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आगे बढ़ते हैं। Now our next speaker is Dr. Ulrich Berg. He is a German scientist and environmentalist. Basically, he worked on Agnihotra and homotherapy. In India, he is working with Dr. Shailendra Sharma, principal of Adarsh Institute of Management and Science. In India, he spent 4 to 5 months in India, where he राहुल सर, worked मैं with... आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, ऑडिबल नहीं हो पा रही है प्रॉपर। आप थोड़ा सा शायद माइक को आपको सेट करना पड़ेगा या थोड़ा फेस के पास रखना पड़ेगा। I'm trying. Sure sir. Hello. Is it okay? सर, आप हेडफोन यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपकी आवाज काफी दूर से आ रही है। Actually, my phone is not connected in my phone, so I'm without headphone using. हेलो हेलो राहुल सर, आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, सुनने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ओके कर दो, बट तो मतलब सेंस नहीं फैन ऑफ करने का। हेलो हेलो, इज इट ओके? अभी फेयर एनफ है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके now we have another guest speaker, Dr. Ulrich Berg. He is from Germany. He is a German scientist and environmentalist. He is basically worked on Agnihotra. In India, he is working with Dr. Shailendra Sharma, principal of Adarsh Institute of Management and Science, Dhammad. Dr. Ulrich Berg spent 4 to 5 months in India, where he worked with Dr. Shailendra Sharma on the homotherapy and Agnihotra. So I welcome on behalf of DLS College, Bilaspur, Chhattisgarh, and Adarsh Institute of Management and Science, Dhammad, in association with ZSI, Zoological Society of India, and the Society of Life Science, Satna. I welcome you, sir, on behalf of all. Thank you so much. Okay. Thank you, Rahul, for the introduction. It was nice to see you here. So first, good morning to everybody, or good afternoon in India. First, I want to thank the organizers for inviting me. Organizers means Dr. Sunita Trivedi, Dr. B.N. Pandey from Zoological Society, India, Dr. Shivesh Singh, and Dr. Shailendra Sharma from AIMS College in Dhammad. Today I'm talking about the effects of Agnihotra on the environment. How does this relate to zoological? About that a little bit later.
Now let us look at the situation of the environment today. Last month we celebrated the World Environment Day, and now many people realize that we are dependent on nature. Nature is not dependent on us. And we have mistreated nature too much for too long. And now consequences are getting more and more visible. Just a few examples. Let's look at human health. This map shows you the number of pollution-related deaths in different parts of the world. And you look at the map, you see India is in the highest category. Means 20 to 27% of deaths are related to pollution problems. That means every fourth or fifth person who dies, that is because of pollution of air, water, soil, or food. That's really a large number. So that's really a big problem. But not only humans, the effect is there also on animals. Just one example, one recent study, it was from last year in Germany, found out that in the last 25 years, there was a reduction of 75% of all insects. And that is just a big ecological catastrophe, because you, as you are from this field of zoological, you know, if there are no insects or less insects, then birds and so many other animals feed on these insects. So the whole cycle of nature is totally collapsing. That is humans, animals, but also plants suffer. Because of this environmental pollution, leaves are damaged. That makes plants more vulnerable to pests and diseases. Photosynthesis is reduced, growth is reduced, and the yield goes down by 5 to 20% according to recent studies. So what can we do to overcome this problem, this situation? And one such solution, which I want to show you today, is Agnihotra and Homa therapy. With this method, all nature will come back to harmony. The environment, atmosphere, soil, water resources, also biodiversity gets restored. And thus, food security can be maintained, farmers get self-sufficient, and human health improves, both on physical and mental level. Now, the subject of this presentation, 3 points. First, what is the method suggested? Second, the results we got so far. And some suggestions for the further research. What is the method suggested? It is called Homa therapy, healing through specific fires. And the basic tool of this Homa method is Agnihotra. Agnihotra is a fire you perform in a small copper pyramid of fixed size and shape. The ingredients are dried cow dung, pure cow dung. Make sure it is from cows only, not mixed with buffalo. Some people say it should be Desi cows. Yes, Desi cows are better, but that's not necessary. If you don't have Desi cow dung from Desi cows, any cow will do, but it has to be pure cow. Same thing with ghee, pure cow's ghee. You need some rice, some grains of unpolished, unbroken pieces of rice, some mantras, simple mantras, which is an exact vibration, and the timetable of sunrise and sunset, exact to the second. Why these mantras, and why is the timing so important? This traditional knowledge says that at sunrise, there's a flood of energies, subtle energies, electricities coming from the sun to the place on the earth. And this flood carries a subtle music in it. The quintessential sound of that music is the mantra which we utter at that time. Therefore, we have kind of resonance effect that leads to the big healing effect of Agnihotra. Now, interesting to see that some American physicists, astrophysicists, recently
confirmed what this ancient knowledge says about sunrise and sunset. He says at sunrise, million ampere currents head in towards the Earth on sunrise and out again at sunset. So modern science confirms what this ancient knowledge says. And that also confirms the importance of sunrise and sunset. Now, I mentioned the mantras. The mantras are very simple. In the morning, it's Suryaya Swaha, Suryaya Idam Namama, Prajapataye Swaha, Prajapataye Idam Namama. And in the evening, at sunset, Agnaye Swaha, Agnaye Idam Namama, Prajapataye Swaha, Prajapataye Idam Namama. And each time after Swaha, you add one portion of rice mixed with ghee to the fire. What happens then? A channel is created through all the atmosphere, and prana energy, life energy, which lies above the atmosphere, comes down through this channel. An aura energy field is created around all plants nearby. This is why plants get nutrition, they get disease resistant. And when the flame dies, then all this energy comes back and is collected in the Agnihotha ash. This is why the ash has healing properties, can be used as medicine for humans, for animals, and also for plants, and also as nutrition for plants. What are the results so far? Effects on the atmosphere. One thing is that the atmosphere, we know that the atmosphere is very important for us because, you know, without breathing, we can only survive for a couple of minutes. Without water for a couple of days, without food, a couple of weeks. So the air is really of utmost importance. But also for plants, it is very important. And that is what modern science does not acknowledge yet. According to Vedic science, plants get 75% of their nutrition through the atmosphere. But if the atmosphere is polluted, you know, the pores of the plants are coated, so they cannot take in these nutrients from the atmosphere, and they are suffering. How does Agnihotra purify the atmosphere? Agnihotra purifies the atmosphere on different levels. First is biological level, mainly bacteria and so on, fungi. Second, on chemical level, SOx, NOx, and physical level, particulate matter. Let's first look at biological pollution of the air. You see these petri dishes at the left side were opened before Agnihotra for 10 minutes, then closed, and then sent for incubation. And at the right side, same petri dishes, same nutrient solution inside, were opened after Agnihotra for 10 minutes and then sent for incubation, the same thing. And you see the difference. What is the reduction in bacteria just by performing one Agnihotra? Of course, normally we would perform it regularly, morning, evening, and then it would go down even more. This has been done in several places, universities, colleges, and also has been published. Now, chemical and physical air pollution. Chemical air pollution, as I said, SOx and NOx, that experiment was done also in different universities. These results are from North Maharashtra University in Chalgaon. And you see, you perform Agnihotra, and these values go up a little bit during and right after Agnihotra because there's some smoke. But then all the parameters come down, SOx, NOx, and particulate matter by approximately 30 to 40%, by again just performing one Agnihotra. Now, that experiment was done in the evening, and there was one doubt. People said, oh, maybe in the night, you know, naturally particulate matter and all these values will come down. So we performed the same experiment
from morning to evening, we got the same result, even a little bit better results than here. One important thing, although not people know about this, is negative ions in the air. Negative ions are an indicator for fresh air. Means higher percentage of negative ions means better, fresher air, healthy air. Less negative ions is polluted air. Normally, smoke reduces number of negative ions. So when I went to this engineer who did the experiment, he asked me, when I told him, oh, there's some Agnihotra, some fire, he asked me, will there be some smoke? I said, yes, there will be some smoke. And he said, oh, if there's smoke, we don't have to do the measurement. Definitely negative ions will go down. I said, okay, I don't know, just let us try and see. So we performed Agnihotra and negative ions went up. He said, that's not possible. He couldn't believe it. But that shows the smoke of Agnihotra is different from any other smoke. And that any asthma patient will be able to tell you because asthma patients, they cannot stand any smoke. But with Agnihotra smoke, that's different. They even feel that is soothing. What are the effects on water? One experiment was done in Pune about water purification with Agnihotra ash. They took water from a very polluted river. All rivers in Pune are pretty much polluted. It was really polluted. And they poured the water through a cylinder which was filled with Agnihotra ash, and then measured the quality of the resulting water which came through. And you see all parameters of water quality improved a lot. And especially obvious is the bacteriological analysis. It was a reduction of 93 to 98%, depending on the method, how they counted it. So water got purified by just pouring it through Agnihotra ash. And here you see the numbers of the result. You know, the water was very much polluted, and in the end, it was drinking water quality. One other experiment was done in India. That was the effluent of some textile factory. And the effluent was very much poisonous. And just one measurement, the COD, by adding ½ gram of Agnihotra ash to this water, the COD went down by more than half. Bore well, that was in Australia. These people drilled a bore well, they got some water, but the water was highly saline and alkaline. pH was 9.5, salinity 1150 parts per million. You couldn't use this water for plants, for animals, and forget about drinking that water. So what they did is they performed Agnihotra next to the bore well and added Agnihotra ash regularly to the bore well. And within 6 months, pH came down from 9.5 to 7.2, salinity from 1150 to 720 parts per million. And that means they got drinking water quality by just performing Agnihotra and adding some Agnihotra ash to the water. Some funny things happen on the screen now. I don't know what that is, how that comes about. Is it the same with your screen also, or on my screen? It's the same screen, Dr. Ulrich. So strange. Yeah, Okay, you can continue now. Okay.
So these were just, you know, this was drinking water quality. Second was a bore well, but even with larger water resources, Agnihota works. And that was river purification with homotherapy. That is a report which we got from Dr. Shailendra Sharma, one of the organizers of the conference, about the water quality of Narmada River in MP. They studied certain parameters of water quality, and they have certain research stations. And there were 2 research stations upstreams from one homotherapy place, which we have there in Maheshwar, and 2 research stations downstreams. And you see the water quality at the Maheshwar place, the homotherapy place, is best in all the different parameters. Effect on soil. This funny thing on the screen continues. Not sure whether somebody can do something. You nearly cannot see the presentation, but it looks like modern art. Soil. About soil health, one ancient text, more than 3,500 years before now, there was one Sanskrit text which says, "Upon this handful of soil, our survival depends. Husband it, and it will grow our food, our fuel, and our shelter, and surround us with beauty. Abuse it, and the soil will collapse and die, taking humanity with it." And now we are in that situation which they predicted, because already now the FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, says that about 1/3 of the world's soil has already been degraded. And they say if we would continue with the normal agrochemical way of farming, in the year 2050, we would only have 1/4 of the level of 1960 of soil, arable soil available per human being. So that will definitely not be enough to feed the world. So that means soil health is of utmost importance. We have to rejuvenate the soil first, and homotherapy is a big help for that. It will rejuvenate the soil from the level of microorganisms, viruses, bacteria, fungi, algae, and so on. And then a healthy microflora and microfauna is created. We have seen that what happens in an experiment in US done more than 30 years ago. They tested the soil. They tested the soil for water-soluble phosphate. And then they added Agnihota ash to the soil, and water-soluble phosphate increased 3 to 4 times. Similar experiment was done at a government research institute in Germany with similar result. Then the question was, how come? How does Agnihota increase the quantity of water-soluble phosphate in soil? And one hypothesis was that the number of phosphorus-solubilizing bacteria are responsible for that increase. And this hypothesis has been confirmed by some experiments done in Ratnagiri, some college in the south. And they found out, they added 1% of Agnihota ash to the soil, and there was an increase in nitrogen-fixing bacteria 100 times, and phosphorus-solubilizing bacteria even 1,000 times. And at the same time, fungal flora was controlled. That is very interesting. Some more experiments were done at the Central Institute of Subtropical Horticulture in Lucknow by Dr. Ram. And what they found is you add Agnihota ash and harmful fungi, they were controlled with Agnihota ash. But on the other hand, beneficial microbes, they increase when you add Agnihota ash.
earthworms. So we said we have to rejuvenate the soil from the level of microbes and so on. Then next level would be earthworms. And in Homer atmosphere, earthworms generate more moisture in the soil. They increase some hormones, and their productive organs enable that to reproduce at a faster rate. With Homer, in less than 1 month, the number of earthworms doubles. Normally that takes 3 to 4 months. And so it's a very important help. Now, let us see at the sodic soil and acidic soil. That was an experiment done in Unnao, which is between Kanpur and Lucknow in UP. And there was soil which was very sodic and pH was 9.86. What they did is they created 3 plots. One they were doing with agrochemicals, one with organic using vermicompost, and one organic vermicompost plus Agnihotra ash. And you see the change in pH. In the first case with agrochemicals, nothing changed. pH was 9.86. The second case with vermicompost, it went down to 9.06. That is 0.8 points difference. That's already quite good. But with vermicompost and Agnihotra ash, the pH went down by more than 2 points. And that is really a lot. And just in one season using Agnihotra ash. Now you could say, okay, Agnihotra ash brings pH of soil down, but it's not like that. We have seen on a farm in Poland, pH was 4.4, and the government engineer said nothing will grow, and still these people started to use Agnihotra and Agnihotra ash, and then they grew everything there. Nobody else in that area grows all these vegetables, including tomatoes, but everything grew. Later on, they tested the soil and the pH was 7.2 also. Now, these findings are quite important because in India alone, we have approximately 7 million hectares of sodic and saline soil, and we have approximately 6 million hectares of strongly acidic soil. Strongly acidic means the pH is less than 4.5. And so we have 13 million hectares of sodic or acidic soil. And if that soil could be reclaimed, that would be a big improvement for agriculture. Now the screen went off. Okay, that would be a big, big improvement for agriculture. And as we said, soil is the useful soil is reducing. So so that will make a compensation for that. Okay. Okay. So now at the beginning, I said that environmental pollution affects plants, animals, and humans. And I said Agnihotra purifies the atmosphere. Now let us see what are the beneficial effects on plants, animals, and humans. Let's start with plants. Many experiments at different universities and research institutions have shown that diseases can be controlled, yield is improved, quality of produce is improved. Just one simple experiment which can be easily repeated even on
school level. It is just you germinate seeds. One is with tap water, one is with Agnihotra ash. But as we know, any ash has some nutrients. So if we add any ash, even wood ash, it has some positive effects. So for scientific study, you should not only compare tap water with Agnihotra ash, but you should also use another control. We call it control ash. You burn the same substances, cow dung with cow ghee, some rice in some copper vessel, but not the copper pyramid shape and not the time of Agnihotra sunrise sunset and not the mantras. Still the difference is very clear. And now that was the effect of Agnihotra ash. Now let's look at the effect of Agnihotra. And here you see shoot length and root length both are much increased if you grow these plants in Agnihotra atmosphere. Effects of Agnihotra on animals, also just a few examples. One was this industrial effluent. I mentioned that before. I said, you know, this effluent of this textile factory, the chemical oxygen demand went down by more than half. But they did also an experiment with fish, because in this river, biotic life was not possible. No fish could survive. But if they added half a gram of Agnihotra ash to a concentration of 15% of this effluent, then biotic life was possible again. And if the concentration of the effluent was 20%, then they added 2 grams of Agnihotra ash per liter, and then aquatic life again was possible. Another experiment was done long time back in Sorry, Dr. Ulrich, just give us a couple of minutes time. There is a problem with the screen sharing. Just give us a couple of minutes only. Sorry for the same. Okay. You can continue, but we have to stop the screen sharing for a minute. Okay. So there were some experiments done in Poland about mortality of fish. That was done in animal shop where they sell fish, ornamental fish mainly. And always when these fish came from the wholesaler to the shop, as you put the fish from one aquarium to another aquarium, there was some kind of loss. So it was quite heavy loss, sometimes more than 50%. So what they did is they performed Agnihotra in the room. They did not add Agnihotra ash. They just performed Agnihotra in the room, and the loss went down from more than 50% to then approximately 10% only. One MSc thesis was done in Holker Science College in Indore about healing of fish with Agnihotra ash. They had goldfish with white spot disease. And then they tried to heal this fish. One was with the normal treatment which you would use with NaCl and copper sulfate. That is common treatment for this disease. And the other one was just with Agnihotra ash. So 2 groups, 2 aquariums, and 2 kind of treatments. And then they compared these 2 sets of fish. And the fish with Agnihotra ash were healthy, and they showed normal swimming movement. But the fish in the aquarium B with the common treatment, they were weak. And now you now without the screen you don't see, but there was also at the end they measured the disease of the fish,
and the survival rate, and there was a clear difference. Agnihotra ash helped much better than the normal treatment, the common treatment, which you would use for that disease. Now, screen sharing would work again. Yep, I'm just allowing it. You can try once. The screen share is now enabled. Okay. So effect of Agnihotra on biodiversity. That again, I mentioned before that biodiversity is a big issue now, and we already have lost 75% of the insect in the last 25 years in Germany. It was studied in Germany, and I'm sure a situation will be similar in other countries also. Now, we have two studies. Both were done under the guidance of Dr. Shailendra Sharma from Damnot, and one was about invertebrates in the riverbed of the Narmada. And you see here, there are two stations, research stations, upstream of our homotherapy center, which is in the middle. And the two stations were Omkareshwar and Mandleshwar, and then two research stations downstream also. And, you know, if you add up all the different kinds of invertebrates they examined, the total number of which they found, invertebrates they found, is much, much, much higher near the homotherapy station. A similar study was done on butterflies, and again here you see number of butterflies much, much, much higher than in the other research stations. And here you see a photo showing all the butterflies in this homotherapy place. Now, very short effects of Agnihotra and Agnihotra ash on human health. One thing is, Bhopal, you have heard of that, the explosion in human carbide factory in 1984. Many, many thousands of people died at that time, and tens of thousands of people were injured, but nothing happened to those families where Agnihotra was performed in their houses. And that was big news. We have many reports on human health, and if you're interested, go to the webpage www.homahealth.com. And now, because of the present situation, COVID-19, everybody is concerned about COVID-19 because it affects everybody of us. You know, now in India you have the lockdown. Here in Germany it's not so bad anymore, but in India it's pretty bad. Colleges, universities are still not working normally, so it affects everybody of us. Can Agnihotra help also with the situation of COVID-19? Yes, it can. First, it reduces the probability of getting infected. And that is just because we have seen at the beginning, Agnihotra reduces air pollution. It reduces particulate matter in the air. And now we think that the most likely way of getting infected is through particles in the air, which carry this virus. And it's not only the larger particles which are created when somebody coughs or sneezes, but also the mini droplets which are created when somebody just talks. And these mini droplets stay in the air for hours. You know, the larger drops, they also only are there for a couple of minutes. Then they come down to the floor. So if Agnihotra reduces, as we have seen before, the particulate matter in the air, then also the viruses, similar to bacteria,
they kind of travel on these particles. They are removed from the air, and then you don't get infected. So that is very important. The second thing is, even if you get the disease, mostly the disease has mild cause. Some people even don't realize it, and others, they're not much affected. It's like a normal cold. But those who have some pre-existing conditions like high blood pressure, high blood sugar level, and heart disease, diabetes, asthma, all these people, they are more likely to get heavily infected. And also those who have died because of COVID-19 are mostly people who already have one of these pre-existing conditions. Agnihotra helps to reduce these pre-existing conditions and thus leads to a less severe cause of COVID-19. And number three, the body's immune system is strengthened by Agnihotra, and thus the body is able to overcome the infection easier. Okay, thank you. This is my contact email address, djt@homatherapy.de. Mind the spelling, it is IE instead of Y. It's a German spelling. These are some web pages. These are some references. If you're interested, I can show you. And that's it. Thank you. Thank you so much, Dr. Ulrich Berg. Now we have another special guest, Dr. Pradeep Srivastava sir. He's a former professor and head, environmental science and immunology, and dean of life science, Barkatullah University, Bhopal. If we talk about his publication, among 70 papers and 10 books are published, and around 28 students doing PhD under him. So I welcome Dr. Pradeep Srivastava sir. Sir, please. Am I audible? Yes, sir, you're fairly enough audible. You can continue. Okay. Thank you very much for inviting me for this talk. I have hurriedly prepared this talk. In fact, there are people who will be speaking specifically on various technologies which are related to zoology and which have potential. I can see Dr. Shivan Singh, Dr. O.P. Agrawal, my senior at Jain. They'll be speaking, but I will be speaking on what kind of infrastructure, what kind of framework is important for whatever skill development or whatever, training that will be including as part of the course content in zoology. So we have been, we have been studying, we have been teaching zoology for quite some time. And like several other subjects, like the basic sciences, this is one science or this is one subject which the student opted for obtaining a degree. But they could not get any benefit of this degree not because it was their fault, because the system had deficiency. Zoology, as all of us know, has great potential, and its application can create a lot of opportunities for self-employment and livelihood generation. This is there in very limited fields in zoology. This was there in the beginning, but there are large number of fields in zoology remains unexplored, which can provide livelihood, which can provide self-employment, etc., to the students. And that's why what basically is required is, the zoology, some meaningful changes have to be brought into it, to make the subject more productive, to make the subject very meaningful. Otherwise it can remain a subject to obtain a degree of BSc or MSc. Now, of course, of late at the national level, it has been realized, not only for zoology but for other subjects also, that we have to bring in some very serious effort is being done to bring in some such changes which makes these subjects, basic science subjects, productive in terms of the potential they have in generating employment or in generating the livelihood opportunities, whether it is botany or zoology or even the chemistry and other subjects also. And this is what we're doing, because the basic effort is that the learning outcome enhances
And this is why the changes in the subject are being brought about. My, in fact, talk will revolve around what to do, what the university, what responsibility university has, what responsibility colleges have, or the professors have, or the experts who are involved in making syllabus have, in making the subject more productive, more employment oriented, and more livelihood generating subject. And now the focus, the idea is there are two streams of students which will come in any basic science subjects. Like for instance, in zoology, there is a stream of students who would like to go into academics. Academics teaching is one in higher education or in research, and for them, a different kind of latest developments, whatever is happening, has to be updated in their syllabus or in their teaching, so that they keep pace with what is happening all around the world in that subject. There is another stream of students which basically want to be trained, want to develop some skill so that they can get employed and self-employed. They can start their own livelihood, practices they can adopt, and they can generate income for themselves. Uh, Such second category people are more in this subject or in the society than the first category, because there are less people who want to go into the research, who want to go into the teaching because of the socio-economic condition, at least in our country. So I don't talk about the other country. We talk about our country only, especially Madhya Pradesh, Chhattisgarh. The idea is that a board of studies that we have in our systems, in our universities, they have a very greater responsibility, because the syllabus that we design, I'm talking about the undergraduate courses first, because the skill development or the training component for employment generation and self-employment, this should be inducted in undergraduate courses first, and primarily in the undergraduate courses. Not in the postgraduate courses, we can teach basic sciences. They're very high science, the molecular biology the Honorable Vice Chancellor was talking about. All those things we can include in the like all of us have studied. But now the basic BSc, a common man or the common student goes up to the BSc, and then he starts expecting, can I do something after graduating, taking zoology as one of the subjects. So like for instance, this skill development or the training component has to be included in the undergraduate courses, and this thing should make a very important component of the course, which can be used for evaluation of the student. This practical training, hands-on training for skill development, this is very important thing, and this should be kept in mind by the board of studies have a dual responsibility. Board of studies of universities have to take care of those students who intend to go in research and teaching, where they have to keep pace with what is happening around, as I said earlier. And also those students, there are a big lot of students as they are in states like our states, both Chhattisgarh and Madhya Pradesh. There are a big lot of students who want that after graduating, we want something, we want a kind of training so that when we pass out, we start our own, or we can get engaged in some similar assignments elsewhere also, with whatever they learn under skill development or under in their undergrad courses. This is what is to be done. And for this, the board of studies, all of us know that there are traditional board of studies. We have in the board of studies structure, we have professors, we have deans, we have experts from other universities and colleges, and there is a central board of studies these days, which the state government is responsible to conduct those board of studies for syllabus development. And all of us have been part of these board of studies, and we know that it's a very big gathering of the professors and teachers, and I do not know how effective it is to bring about the changes that we expect to bring about a major change in our curriculum, in our course at undergraduate level. Those board of studies have to be otherwise it's like training of the trainers. Is right. The professors have to be trained. Professors have to be told as to what is being required in undergraduate courses. So in such big meetings of the board of studies of the government of state government level, they can induct those things. But at the university level, the board of studies are there, and they have a dual responsibility: develop courses which are for the high science students who want to study high science, who want to pursue science at the postgraduate level, and also develop those courses and those induct those components of training and skill development which are employment, which have the potential to generate self-employment and livelihoods
right? So, but now we have to change the structure of the, all of us realize it, and there's nothing new, I'm telling you. We have to change the Board of Studies structure also. In addition to or apart from the professors and the experts who are part of it as members, we should include people from commerce and industries. This is very important because these are the people who are basically are engaged in productive activities, right? And commerce and industry, I'm not talking about the high, the large industries, industry with the medium and small industries. The people representing medium and small industries, and the people who are representing cottage industries even, because we cannot teach them very high science, very high technology in this thing. But those who are in the small scale industries, the people coming from the cottage industries, they will come and tell us as to what you should include in the courses, what is the requirement, and what should really be taught, and everything they can contribute in it. And that's why Board of Studies, and if Board of Studies doesn't have this provision, the ordinance need to be amended. And this is what has to be kept in mind, and we should do it without losing time. Some of the things now, skill development basically is what is needed in the skill development or the training is that the skill development should be identify such areas which are basically I'll just tell you about the skill development. There is at the Government of India level, we can include areas, we can identify areas as to what there are regional demands, there are national demands. So this we have to decide whether we have to cater to the regional demands, or we have to produce the students who can move to other states also, the other parts of the country, with whatever skill they develop during the course they pursue in the university and colleges. So this we have to divide. But in my opinion, we must prepare the students who can fulfill the regional demands, or who can exploit the opportunities in the region, in the state, in the home there, so their own home. And also they should be able to move to other parts of the country, but that they can do only when they have some standard, or the training or the skill development that they have done is acceptable to them, or the training or the skill development that has been given meets the standards which have already been laid down elsewhere, which have been laid down by the Government of India under the different frameworks which they have for skill development. And this is what has to be kept in mind, because we cannot do it. We cannot, we have to stick to standards. We have to have some kind of so that this become a nationally accepted, nationally across the country, our students and the knowledge our students have. And this is what we have to keep in mind. I will shorten my lecture. Although I have been given 30 minutes, I'll shorten it. In 10, 15, 20 minutes, I'll finish it. Now, there is, all of us know, because there is a national policy, national skill development policy, national skill development and entrepreneurship policy of 2009, the government of India has brought in. And there is a National Skill Development Corporation also they have established. The basic idea of this policy is to create opportunities for youth to get self-employed, to get the opportunity of self-employment, to learn things, to get trained. This is what is there in this. And the areas identified for skill development and training under this policy are those which are there in another program of Government of India, Make in India campaign. So those all areas of Make in India campaign have been included in it. And apart from them, there are several other areas have been afterwards included in it. And we have to see that if we are developing courses, undergraduate courses, especially in zoology in our subject, and if the trainings that we have identified or the job roles that we have identified for training under the subject are not included in the Make in India campaign or the national policy infrastructure, skill development infrastructure, then we have to, there are other guidelines also that we have to follow. And because, those guidelines we should follow. This is not written, because I need acceptability of my student all over the country, anywhere they go. So those guidelines we have to follow. And if we follow this thing, perhaps zoology will yield amazing results, I'm sure. Now, there is what is called as the National Skill Qualification Framework. Now, National Skill Qualification Framework at the Government of India level, this basically a competency-based qualification, recognition of the qualification.
What happened under this national skill qualification framework, they have created 10 different levels, and these 10 different levels are based on the series of knowledge and skill and competency the person will have after graduating or after completing those courses. There are postgraduate courses, there are undergraduate courses, there are certificate courses, there are diplomas, there is a PhD program also. It all depends upon which course you do, and so your competency, your skill, your training, your ability, your knowledge base, everything goes up as you go up in the course. And then to make things more acceptable, there is another thing, it's called as NOS, the National Occupational Standard. Now, National Occupational Standard basically is, this is the statement of knowledge, skill, and understanding that one develops after the skill development. So what knowledge you have got, what kind of knowledge or what level of knowledge you should develop, what level of skill you should have, and what level of aptitude you should have. This is what is all decided by National Occupational Standard. So whatever we do in our courses in zoology, when we develop it for our students, all these things should match with these. They're compatible with these standards, because we want acceptability of my student or our students elsewhere also, not only in Bhopal or Jabalpur or Bilaspur or Raipur. Anywhere they can go, right from east to west to north to south, anywhere. And that's why we should stick to those things. And when we develop these courses under Board of Studies, we should have knowledge of all these things. And that's why a trainer's trainee, as I said to you earlier, and I should be trained for it. I should know all these things before I sit in the Board of Studies and contribute and redesign our syllabus. Now, there is a National Quality Assurance Framework is also. Now, National Quality Assurance Framework at the Government of India level, this says that, the skill that you develop, it should be, or the training that you are giving, it should be standardized and it should be consistent. And whatever training we give across, this should be acceptable across the country. So that, and it is laid down. It is all, NOS is already laid down for various fields where the training is required. And when we develop it for our course, and if the NOS doesn't include the standards for whatever we are giving training in, then we have to then, through Board of Studies, we have to involve, as I said earlier, people from the industry, people for commerce, people for different places where they are running such enterprises, and with their help we have to make standards, our own standards, and they should be compatible with the national quality framework, because that should match with it. This is not requirement, but if we do that, perhaps we will have greater acceptability of the students across the country. And this is important, because so these are some of the things, and I would like to tell you about what can be done, what kind of skill we can do. The Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, spoke across the subject event, right from molecular biology to genetics, everything is spoke about, and those are the areas which really have very great potential. Dr. Pandey was also speaking when we heard about Agnihotra, and I know we have people still to speak about more about it. But I am speaking about what should be included in this training or skill development in zoology and undergraduate classes is based on my own experience. I did, I'm basically head of limnology and environmental science department, and also a 10 years head of zoology aquaculture department of Barkatullah University. I'm basically a zoologist, wildlife and biologist. I'm telling you, wildlife biologist. Before that, I would like to tell you, there are two areas where we can really contribute. Some of the training, some of the skill development are commercially important or commercially viable. You get trained, you start your own employment or your self-employment, your own enterprise, your own livelihood, you can generate income also. Some of the trainings do like this. There are other kind of training, other kind of skill development, which we should include, are basically to protect and conserve the environment. So, and that again is something which will give you a job, which will give you employment, where you can be self-employed also, you can get employed elsewhere also if you have those kind of training. So for instance, like wildlife, I'm telling you, the wildlife, a zoologist can contribute a light on wildlife is nothing new, everybody knows here, but there are latest developments which they can really incorporate in whatever they learn, or
whatever training we give to them in undergraduate courses, we can teach them, with the help of GIS. I've been doing GIS when I was working on Narbada River under NVDA program. So we have a very good GIS system also. GIS is one they should know about, and they should be taught about this GIS system. They should be taught about there are large number of protocols are there. There are large number of computer softwares here there, which they should be trained in, so that they can find out the distribution of the population, of the wildlife population. They can find out the movement of the wildlife population across the forest or the area. They can also find out as to what is happening to the habitats, whether it is degrading, it is the same, or it is adversely affected. Everything they can find out through these programs. They can also find out the what is happening to the with respect to the invasive species in the forest, which or the diseases which can adversely affect the wildlife. They can also develop the conservation management plan for wildlife, which can, and these recommendations they can send to the government, and they can send to the people also. This is very important thing, because and these people, perhaps such students, may not be employed in a private enterprises, a private organization, but they will definitely be of great demand in the state government, in the environmental agencies of the state government, or in the development departments of the state government. I'm telling you, this is very important area. Another area in which I've been working for so many years is environment. I'm basically a limnologist. So in the environment, I'm telling you, I'm currently engaged in two big projects as a consultant. One is based in Patna. This is an Asian Development Bank funded project of 5,000 crore, where I'm working as a environmentalist and biodiversity expert. There's another one is with the Ernst & Young in Madhya Pradesh, where I'm again environment expert there. Not because I'm not telling you because of what I'm doing. I'm telling you my experience is that there is a great demand of experts in biological diversity study, and both aquatic and as well as the terrestrial. The project in Patna project is a very big project. 5,000 crores is not a small one. But I'm telling you, we're not getting people who are really a good, who can be readily and immediately employed as biodiversity expert in the project. And we are in demand still. If there's somebody who can write to me, I can recommend it. There is still demand is there, even in the project Ernst & Young also. And my idea is we can train them as a very good biological diversity experts in the 3 years course of the BSc. Let them study the identification of the aquatic animals, let them study the identification of the terrestrial animals, ranging from invertebrates to mammals, etc. And side by side, not side by side, along with it, their ecology, how ecology impacts them, how they impact the ecology, and their human interaction, etc. How the various development plans impact them or affect them, and how they, their interaction. All these things, you train them and they will be easily employed. You open the website of World Bank, they open the websites of employment, the vacancy websites of Asian Development Bank or the India International Financial Corporation or any other African Development Bank. You will find there is a great demand of such experts in them, and the young people can go there, experts. And I myself, after retiring, I'm working there. So there are all kinds of people can be absorbed. They're provided they have the skill to do that work. And there's a great, there's a very good payment for them. I'm telling you, with the international agency, there is very good payment for them. So this is what is why environment area is very important for training, because all the funding agency, as I named some of them, the Asian Development Bank, the World Bank, the International Financial Corporation, the African Development Bank, the Indian IDBR, the Bank for Building and Reconstruction, IDBR. All these, they fund the various development projects in the state, in the country. Even the government of India funds some projects, development projects in the country. There is a urgent requirement of environmentalists, of biological diversity experts in all these projects, before the project starts, during the project period, and after when the project comes in operation. For the person can be employed for 4 or 5 years at least in any project as an expert, environmental expert, because there is environmental safeguard policy of Asian Development Bank, environmental safeguard policy of the World Bank and other banks, and also the government of India has large number of acts. There is an act on Water Pollution Control Act, Air Pollution Control Act, the Biodiversity Act,
Then the act is the Environmental Pollution Control Act. You know, the number of acts are there. All these acts are basically they compel the project owner to carry out, to take care of the environment, and to carry out the impact assessment and see how the life is being affected by the project, and what to do to save their life, what to do to protect the life. And I'm telling you my own experience, with I interact with the Asian Development Bank also there when I go to Patna. If proper environmental study is not done, they can stop the grant. And everything that is done in the project, right from the hardcore engineering which they are doing up to the environment and everything, it is in the public domain. Anyone can open the site and see as to what is being done in environment, what is being done in the hardcore engineering and science in the project also, everything, so that nothing can be hidden. And that's why the environment is very important, environment field is. And I would request all those who are to kindly see that the skill development and training in these fields of environment are included in the undergraduate classes also for employment generation viewpoint. Then there are then aquaculture. We have people representing I think SEUs from Gorakhpur or somewhere. They will be perhaps telling you more about the aquaculture. But then my own experiences that we about the environment, I'll just tell you that some of them are here, my students. We have done a lot of work with ISRO. ISRO engaged us for Nal Sarovar. They wanted to develop a project plan for the Nal Sarovar. It is in Ahmedabad. We did work for them. Either with the principal investigator, and some of them here are the research scholars there. So we contributed ISRO, Barkatullah University, and CEPT is a university in Ahmedabad. We all three worked together for Nal Sarovar. It's a very big, some 60 square kilometer area lake, and it's a very rich in biological diversity, very rich in biological diversity. So there are a lot of work we have done for environment, where I have realized that why we need people who are expert in environment and who can be engaged. Now in aquaculture, like I'm talking about my own state, Madhya Pradesh. I'm talking about even Chhattisgarh when it was undivided, you know. Seed production, the fish seed we have to still bring from West Bengal. In Madhya Pradesh, we are bringing from West Bengal. I do not know what is happening in Chhattisgarh, whether they are able to produce fish seed requirement they're meeting or not. They also bring from West Bengal. Fish seed production, breeding in Madhya Pradesh, you know, it is a confession. Although I don't represent government, but my own experience, we had hardly very handful people who could do captive breeding of fishes. We were depending upon those 4-class people, and they were from the West Bengal. They were professors, they were researchers, they were all kind of directors and deputy directors, everybody. But basically, when it came to how to breed fish and produce seeds and spawn, we depended on those people who were class 4 people, and they're based on West Bengal. They came from West Bengal. They settled here in Madhya Pradesh, in undivided Madhya Pradesh, when Chhattisgarh and Madhya Pradesh was together. So what I'm telling you, there's a lot of practical training, hands-on training can be given in fish breeding, fish feed production, etc. And there are other places also, like for instance, duck cum fish culture. We did duck cum fish culture. I brought duck, Khaki Campbell duck from Bilaspur. They are very good ducks. And I did duck cum fish culture in Madhya Pradesh, where DST sponsored project. And this is something which really brings money, which really is income generating. Here in Bhopal, I did it. So, you know, there are fisheries people expert, they'll tell you more about it. But what I'm telling you, if we are trained in it, we can do a lot of things. We can start our own enterprise. We can get employed with others also who have bigger systems of fisheries production. Freshwater prawn culture is very important. Prawn, as you know, is very freshwater prawn culture. Madhya Pradesh Council of Science and Technology did in Kotela Bhata, they did in Raipur, Rajnathgaon, and there were several others. I've been going there. Dimar is another place with the MP Council of Science and Technology. We did, some of the scientists are there in Chhattisgarh now after division. Very successfully did, and perhaps the most successful prawn farmers were from Chhattisgarh. The Chhattisgarh is a better place for the prawn culture, freshwater prawn culture, than MP. So that was another project, because I know about this project. It was a DST sponsored project. Then about the post-harvest technology. Post-harvest technology, if they are trained in post-harvest technology,
They can be trained in value addition to the fish product. There's another skill, another training, which has a great potential for self-employment. This can be done. So this is the area of aquaculture where this can be developed. There's another very important area. I just would like to tell about, like, Agnihotra. The professor has spoken about the Agnihotra, which is there embedded in our Vedas and our culture, ancient culture, and it has a science behind it. It's about cow. You raise cow farming. Why it is important? Not only for milk. I am talking about those cows which have been abandoned, which do not yield milk. They are loitering on the roads. Collect them, raise them in a farm. Cow gives dung, the cow manure. The cow manure, how important cow manure is, everybody knows. Now, the entire system, I'll just tell you why it is environmental friendly and environmental friendly and productive system, and how employment can be generated. The entire waste from the vegetable markets, just across the road close to my house is a very big Bitton market called as the vegetable market. Lot of vegetation is there after the hard close in the night. You collect that vegetation, bring it to that, use it as a food for these cows. And so this is what you're taking care of the environment. Then the cow manure, it is an established technology, nothing new I'm telling you about. It gives you methane, and from methane methane can be directly used as a source of energy by burning it. Methane can be converted into hydrogen. There is a technology available by anaerobic and aerobic system. This hydrogen can be used for energy production, for electricity production at several other places also. I'm telling you, this is very important thing. And I'm not telling you it is, about the Toyota car company. Toyota car company, there is another one is Tesla, is a very international big company of the car automobile production, and then there's another is Toyota. What Toyota has done, and they have demonstrated is in SFO in LA also. I was there in SFO, San Francisco and Los Angeles. They have their plant where they produce hydrogen from methane. The methane derived from the cow manure. And this hydrogen they are using for their new car, which is called a Mira. I think Mira, I just forgot the name. Mirai, or it's a Japanese name, because this is a new car which runs on fuel cell. And they use this hydrogen to run that car. Tesla doesn't do. Tesla has a battery operated, but they have done and they have demonstrated it is very well working there. It hasn't come to India because we do not have the hydrogen outlets also. But this is how the cow can do it. And I have seen it, and I have studied in one of the Stanford University report. I was reading this thing about it. So I just say whatever I have seen is really come true. But it is really true, because the Stanford University, Stanford is there and close to SFO. They have done it. Now, about this is about the energy production, and we can create such system. We can create a system. This is a very environmentally friendly system. We take care of the cow which is abandoned by the owners. It doesn't give more milk. So this is one thing. Another is of the cow urine. Cow is a mobile medical dispensary. And the cow urine has an immense importance. Whenever the child I have used it, my father used to give us the urine, but that was a time it was very difficult to take that urine. But now cow urine is available in capsule forms in medical stores, and large number of curable and incurable diseases can be taken care of by the cow urine. I was reading about the cow urine recently. We have a Jain cow enterprise in Indore here. It's a very big enterprise, and they produce cow urine and various products of cow urine, which is purified. It doesn't have those contamination that the raw urine has. And that's why the cow urine again. So what is not useful in cow when it is alive, when it is no more, it is still useful. So I think giving training, veterinarians get this training, but why not the zoologists? They study mammal, they study the mammal physiology, mammal autonomy, everything. So we can raise the system, and this thing should be included in the skill training and skill development and training part. And this is what there are large number of areas. There are bigger people, there are experts available to speak on, but this is 2 or 3 areas which I am engaged in, and I have been engaged in, and I have realized why they are important, and why skill development packages should be in the board of studies, should generate, should develop and include in this. And they should be used for evaluation. Seriously, 60% of it should be used for evaluation of the student performance.
Thank you very much. Thank you so much, Dr. Vaikar, sir. Oh, sorry, Dr. Srivastava, sir. Now we have another guest, Dr. B.B. Vaikar, sir. He will join soon. एक कमेंट था लिंक का, फीडबैक लिंक का, हम आपको विद इन 1 डे और 24 आवर्स हम आपको एक मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको फीडबैक लिंक सेंड करेंगे, जिसमें आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। हम जान रहे हैं कि हम इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आपका शायद स्क्रीन शेयर हो गया, आप स्क्रीन शेयर टर्न ऑफ कर सकते हैं। किसका स्क्रीन शेयर हो सकती है? स्क्रीन शेयर टर्न ऑफ कर दिया गया है। ओके, तो ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है जिसे आयोजित कर रहे हैं DLS कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़ और आदर्श महाविद्यालय धामनोद। साथ ही हमारा कोलैबोरेशन है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल सतना से। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा आज का जो वेबिनार है इसका टॉपिक है रोल ऑफ अप्लाइड जूलॉजी इन करंट सिनेरियो। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं से रिक्वेस्ट है कि आपको फीडबैक जो लिंक है वो विद इन 24 आवर्स आपके मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको पहुंचा दी जाएगी। अभी जल्द हमारे से जो डॉक्टर वाइकर सर हैं वो जुड़ने वाले हैं, maybe 5 to 10 minutes he will join us to this webinar. Vaikar sir is in the line. Live, okay. I welcome Dr. Vaikar sir. Thank you, sir. I am audible. Yes, sir. You are fairly enough audible. Sir, you are audible. Huh, okay. Okay. Good afternoon to everyone. Firstly, I am very much thankful to the principal, DLS PG College Bilaspur, Dr. Shivesh Singh sir from Satna, Dr. sir from Indore Dhamnod, and Dr. Kamal Jaiswal sir from Lucknow. I am also very grateful to Honorable B.N. Pandey sir, President, Zoological Society of India. I am very much thankful to all the organizers for inviting me and giving a chance to deliver a lecture on topic employment and income generation potential of beekeeping. You know that as a nation, we have a number of issues like population growth, unemployment, decline of agricultural production by quality and quality, production of agricultural production from the stagnant resources, and to produce toxic-free food. Because the population is increasing, snowfall rate. Presently, the Indian population is 121.9 crores, and by 230, it will be 140 crores. There is a burden ultimately on the farmers to increase agricultural production by quality and quantity. And secondly, employment. Among the 140 crores of population, 35 to 40 crores will be the youth between the age group 20 to 40. And to provide employment to these young groups is a major challenge in front of nation. Another decline of agricultural production due to the decline of soil fertility and population of pollinator
agricultural production is declining day by day. There are many other reasons also, but these are the major two reasons. Stagnant resources. As the population is increased, snowfall rate, the per person per hectare land is reduced. And in present, the shortage of water. Therefore, farmers have a challenge to increase agricultural production in minimum land and water, that is from the stagnant resources. And to produce a toxic-free food, because we almost aware that the one train is running from Hisar to Bikaner, and the name of that train is a cancer. I think some participants are also joined from Maharashtra. Anuradha Kulkarni is there. He is my colleague. In a Kolhapur district, there is a one, the name of that taluka place is Sirola. And this Sirola taluka is known for production of vegetable, which is supplying that vegetable to the Pune and Bombay. And for growing a best quality of vegetables and nuts, they're using a tremendous amount of pesticides. And due to this, in a single taluka place, 18,000 cancer patients are reported. And therefore, this is a big challenge in front of us to produce a toxic-free food for our better health. Therefore, to handle the above problems means to increase agriculture production by quality and from the stagnant resources, to generate employment and income from the stagnant resources, and to produce a toxic-free food, we need eco-friendly technology. And therefore, there are many options, but out of that, beekeeping is the best option, and beekeeping help fight against these problems. Because beekeeping is eco-friendly technology, honeybee does not compete to the other component of farming system for resource. What we need is for the survival, we need nectar and pollen. And for collection of nectar and pollen, we continuously visit one flower to another flower. And if otherwise, you do not collect nectar, that is lost. And honeybee convert that collected nectar into a honey, and every year millions of tons of honey is collected, and nation is earning the money. If beekeeping is not practiced, it is a national loss. And we all know the values of medicinal values of honey. And therefore, we not only collect the pollen and nectar from the plants, but in that time, she pollinate the many plants. Therefore, bee provides pre-pollination services. And due to the bee pollination, crop production is increased by quality and quantity. From my own, I have done experiment in my district, Aurangabad district, and I reported that due to the bee pollination, agricultural production is increased 40 to 160%, and that depends plant species, whether this plant species is self-pollinated or cross-pollinated. Beekeeping is side business. It provides supplementary or major income to the people in the rural areas. According to the National Bee Board report, income from the 100 bee colonies is around 3 lakhs. And therefore, few colony can be maintained in the courtyard of the house, and the honey and other bee product, because the modern scientific beekeeping allows to collect good quality of honey, good quality of bee wax, pollen, royal jelly, propolis, bee venom, that easily can be harvested from this beekeeping practice. You know that beekeeping for whom? Beekeeping for everyone. There is no boundary for the age and sex. The people from all ages and sex
can take up this activity. Even landless labor can take up this activity because land ownership is not required. Beekeeping is a innovative business. उसको हम नावीन्यपूर्ण व्यवसाय कहते हैं. Because to start any business, 7 components are required. One is land, second one is handsome amount, third one is intensive training, fourth one is workshop site, fifth machinery, sixth raw material, and 7 labor. These are the 7 components required to start any business. But for beekeeping, only 2 to 3 components are required. Regarding the raw material, for beekeeping, no expenditure on raw material is required, because bee boxes, for beekeeping, bee boxes and live honeybees are required. These bee boxes and whatever other accessories are required, they are made from the local material, local plant material, plant wood, and they made from a local carpenter. Honeybees are free natural resource that can be captured from the nature and installed in the box. There is no need of labor. Honeybees are the best labor, because for the survival, honeybee visit continuously one plant to the another plant and they pollinate. And in that time, she collect the pollen and nectar. And they are the excellent free laborers. Whatever raw material required for this business, another nectar and pollen, they are freely available. Bee is the good labor, therefore no problem of leave, medical leave and other such problems. There is no need of workshop and site. Land requirement is, or in other words, I can say no land requirement, or if required, minimum land is required. Because in Maharashtra, I am belonging to the Aurangabad district, there are a number of farmers who are cultivating pomegranate, and these farmers rent bee colonies to pollinate pomegranate, and they giving the 2,500 rupees for 1 month to keep the boxes in their pomegranate field to pollinate their crops. And therefore, there is no question regarding the land requirement. Low initial cost for setup is required. Only capital investment is very less on bee boxes and small other accessories. Relatively low technology is required. Beekeeping basic are very easy to master. Even illiterate people can train easily. And in beekeeping practice, whole family can be involved very actively. There is a good opportunity for a quick return, because if you purchase bee boxes, bee colonies, and install into any land, within 2 to 3 months, we can start to collect the honey and other bee product. This beekeeping is environmental acceptable farming practice. And due to the beekeeping, the agricultural production is increased. I have already mentioned that from the scientific beekeeping, we can collect 6 bee product, and all the bee product have a long life span, and they have a good food value. You know that beekeeping, why? Another question. Beekeeping is a source of income to the rural people, because bees are kept or maintained in the rural areas.
First, my question, if you ask this question to the farmers from India, beekeeping why? They always say beekeeping is for honey. If you ask this question to the farmers from Israel, USA, Japan, China, and Germany, they say that beekeeping is for pollination. Because the primary beekeeping is not for honey. We take the benefit of primary role of honeybee, that is pollination. And if bee pollinate, ultimately agriculture production is increased. And if you scientifically maintain a strong colony of bees, there is a good chance for collection of 6 products. Honey, not only honey, good quality and brands of honey. Beeswax, royal jelly, pollen, bee venom, and propolis. And therefore today, the beekeepers, now even from India also, they always say that beekeeping is not for honey, but the beekeeping is for increase the agricultural production by quality and quantity, means beekeeping for pollination. And then beekeeping for not only honey, but to collection of good quality of honey, wax, royal jelly, pollen, bee venom, and propolis. Beekeeping posts a good health because beekeeping practice is done early in the morning and late in the evening. And bee boxes are kept in the rural areas, in the remote areas, means away from the pollution. And as bee practice is done early in the morning, at that time the environment is very pleasant, and therefore ultimately your health is good. And we know as we are doing the beekeeping practice, we are taking the honey regularly, and therefore they promote your good health. And therefore, from the beekeeping, we can earn, there is a tremendous chance to earn the money by selling the honey, beeswax, royal jelly, pollen, bee venom, and propolis. But for collection of these bee products, specialized skill and expertise is required. One thing I want to mention here, we know the price of bee venom. The 1 gram price of bee venom is 8 to 18,000, means price of bee venom is more than gold. But to collect such a bee venom, to collect such a royal jelly, we requires a specialized training and skill. We know that not only from these bee product we earn the money, but there is also good chance by trading the colony for pollination, by multiplying the honeybee colonies, increasing the colony number, production of bee equipment, means, and by bee plantation method. By this way, we can increase our income generation potential. Species of honeybees in India, presently, 5 species are imported. One is Apis dorsata. Second one is Apis serena indica. Third one is Apis mellifera. Actually, Apis mellifera is not Indian bee species. It is exotic species. But from last 50 years, these bees are used in beekeeping practice in India, and this species is now well established. And the 4th species, that is Apis florea. This species is also called as a garden bee or smallest bee. And the 5th one is Melipona, stingless bee, or it is also called as a tubercle. We know that Melipona or this stingless bee
is also a very significant importance for the pollination of small flower plants. But for the selection of beekeeping practice in India, two species are predominantly used. One is Apis serena indica. This is species is from India, and second one is Apis mellifera. This I have already mentioned that it is an exotic species. Any bee species, there are three components in the hive. One is queen, second one is worker, and third one is drone. Queen and worker both are female, but morphologically there are so much difference, and their duties are also different. First, regarding the Apis dorsata, this Apis dorsata honeybee construct comb, open air, exposed to the sun and air in tall trees, tall buildings. These bees are very ferocious and attacks in groups. They are a frequent migratory inhabitant. And as they are, because of their ferocious nature and migratory behavior, it is not possible to kept into the box. But as compared to the other, all the bee species, these giant bee or a rock bee, or this is also called as Apis dorsata species, is excellent pollinator, and from most of the honey comes from that species only. These honeybee are a good gatherer of honey. From in a single year, from a single colony, we can obtain 36 kg of honey per year and 1 to 2 kg of wax. This single, this bee species is an excellent pollinator because she starts her duty early in the morning and stop her duty late in the evening. In a single day, single bee visit more than 7,000 flowers. And in a single box or single hive, the bee number is more than 30 to 35,000 or maybe more in number. Then we can calculate how much bee pollination service is provided by this species of bees. Second species is Apis serena indica, or in other words, this species is also called Indian hive bees. This commonly found in forests and even in plain regions also. His main characteristic is these bees construct her comb in the cavities of trunks or between the walls of building or rocks in the dark places. These species make 7 parallel combs, and from this species, if they maintain very well by taking the utmost care from this species, we can collect 43.6 kg of honey per year. But for this requires excellent management. Another Apis mellifera, mostly throughout the India, this species is nowadays used because this Apis mellifera have a large body size. She work better. This bee is very gentle and good honey and pollen gatherer, and she is easy to handle. Fourth one species is Apis mellifera. This species is not used in beekeeping practice because, but honey collected from this bee species is excellent and have a medicinal uses as compared to the another species. And fifth one species is stingless bees or dammar bees, Melipona.
this bee is an excellent pollinator, and particularly the plants, those plants having very small flower size. These bee species can withstand with high temperature also, but this Apis mellifera cannot withstand with the high temperature. Honey production in general from the Apis indica, in general mode, from domesticated colony, we can collect 15 to 20 kg of honey per hive, and from Apis mellifera, an average 50 to 60 kg of honey may be collected. Honey production can be increased by performing migratory beekeeping, and it is also depends on availability of flower resources. Because from Maharashtra, some beekeepers migrating colony from Maharashtra to Madhya Pradesh, to Rajasthan, to Punjab and Haryana. By by performing a migratory beekeeping, they collect 1,000 tons of honey. You know that honey contains more than 200 different components. Its composition varies according to the floral resources and origin, and also that the quality is also depend on the bee species, plant growing in the area also. You know that from the beekeeping, we can collect a different bands of honey by migratory beekeeping, because honeybee are very loyal to the flowers. Tendency of bees is to exclusively visit certain species by passing the other available flower species. Because in the bee colonies, there are 3 castes of bees: one worker, drone, and queen. In the worker, there are division of labor, and some group has a duty. That is, there are some bees. These bees are called as researcher bees. They visit the nearby area of their hive, collect a sample, and give this sample to the royal jelly, and then they're taking the decision from which flower plant bee sources they start to collect the nectar and pollen. And if, as and when this queen bee giving a direction to the worker bees to collect the honey from certain plant species only, then until the end of flowering, all the visiting only that plant species only, not to the others. And therefore, there is a good chance to collect a honey of brands of honey, different brands of honey, and that there are honey. If honeybee visit or collect the honey from acacia plant, when this plant is in the flower condition, eucalyptus honey, jamun honey, azwain honey, coriander honey, lychee honey, moringa honey, neem honey, there are good chance to collect a specific collect honey in a specific season and from a specific plants only, because bees are very loyal to the flowers and plant species only. Once she start to collect the honey from species, until the end of that flowering, she cannot visit to the other flowers. And because of this reason, we can collect a honey or brands of honey, and these each having a specific significance, medicinal value. To collect 1 kg of honey, honeybee visit 5.7 million flowers, and she travels to collect 1 kg of honey 1,37,500 miles of distance. Single bee visit 7,000 flowers per day.
single visit bee collect 32 milligram of nectar, and in a single visit bee visit more than 100 flowers per flight, and in 1 minute 40 flowers. Single bee make 1 teaspoon of honey during her life. Chemical composition of regarding the chemical composition of honey contain more than 200 different components. Honey contain fructose, glucose, sucrose. They also contain so many essential amino acids, essential minerals like calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc. The honey also contains acids, citric acid, lactic acid, so many acids are there. Honey also contains proteins and near about more than 18 essential free amino acids. Honey also contains enzymes like glucose oxidase enzymes, catalase enzymes, digestive enzymes. Honey also contains so many vitamins like vitamin C and so many antioxidants. And therefore, honey is an excellent food and having so many medicinal uses. Honey is gastroprotective, anti-cancer, antibacterial, anti-diabetic, antioxidant, cardioprotective, wound healing, and anti-inflammatory properties. And therefore, the value of honey is equivalent to the amruta. Value of honey is equivalent to the amruta. I want to just explain regarding to 4 to 5 points only, because I need to go for next other component. Medicinal uses of honey. It is a pre-digested in form, hence infant can take direct benefit. Honey is an instant source of energy. It improves the energy level and enhances the physical stamina. Food, regarding the food value, 200 gram of honey provides nourishment equivalent to 11.5 liter of milk and 1.6 kg of cream and 330 gram of meat. From the long time, from prehistoric time, honey is used to wound healing purpose, because 4 mechanisms are proposed for wound healing properties of honey. Because we are well known that honey contains mostly glucose and fructose. And glucose and fructose, the characteristic is to attract the water molecule. When honey apply on the wound, ultimately these glucose and fructose absorb the water molecules downward, and therefore desiccating the bacteria or fungi, whatever they are present nearby and into the wound, and they desiccating or preventing the growth of that bacteria and fungi and viruses. Raw honey contains glucose oxidase. Glucose oxidase is an enzyme that in presence of little water, they are converted into the hydrogen peroxide. And we know that hydrogen peroxide is mild antiseptic. Raw honey also contains pollen, enzymes, and proline and ascorbic acid. This proline and ascorbic acid are highly needed. They stimulate the new tissue growth, because proline and ascorbic acid are required for collagen synthesis. This honey can contain additional medicinal compounds, that is some essential oils, and they also contains so many polyphenols, flavonoids, and they also contains so many antioxidants. Honey is excellent antioxidant property because honey contains catalase, ascorbic acid, and so many polyphenolic compounds. And therefore, my suggestion to everyone,
every day take a teaspoonful of honey. Every day, because day to day we are exposing to the pesticides or various toxicant. When any enters into our body, they generate reactive oxygen, and that reactive oxygen species acting as a molecular seizure, they're damaging our enzymes and soft tissues. To prevent them from such damages, if you take a honey, because honey is a good antioxidant source, they scavenge the free radicals and protect us from that oxidative damage. This honey helps to build hemoglobin level because honey contains iron. It is good blood purifier. It prevents against ulcer on tongue, gastrointestinal disorders. They improve your digestive or use to handle the indigestion problem because honey contains, raw honey contains invertase, amylase, that is, these are the digestive enzymes. You know that by consuming the honey that help prevention of indigestion and gas problem also. So always take a honey to solve such a problem. Honey help to replace lost electrolyte and provide an energy source at the time of dysentery. It kills typhoid germs within 48 hours, and therefore my suggestion everyone to take a spoonful of honey every day, because honey is a rich source of so many vitamins. It improves the metabolism. Honey helps to stabilize nerves problem of the human body. Honey is good for improving appetite, eyesight. Those having eyesight problem, take a 10 ml of honey, mix with 10 ml of carrot juice and consume regularly. That will help to improve eyesight. Honey help to stop prematuring the aging. Those having some arthritis problem, my suggestion is that to take drinking of a teaspoon of honey with warm water and a teaspoon of cinnamon each day, that will help to relieve from the arthritis. In a stressful condition also, if you take 15 ml of honey orally to reduce stress and fatigue, this is the best solution for the athletics also. Honey also help to sound sleep because honey has sleep inducing properties which help you to sleep well, because nowadays a number of individuals having a problem of sleep disturbances. Second one is sore throat. If you have some such a problems, take a 5 ml of honey, 10 ml of lime juice and mix well and consume every day. If you have a more problem, then add a pinch of black pepper to increase the blood circulation, and that we will got the excellent result. This honey is also a good solution. Those are having asthma. For this, take a 2.5 gram of black pepper powder, 5 ml of honey, and ginger as every day. That will help to solve the problem of asthma. Those who have a problem of obesity or cholesterol level, high cholesterol level problem, my suggestion
to those individuals to take a honey with garlic clove. For this one, I want to suggest one method is to keep garlic clove immersed in honey for near about 2 to 3 months. And then after 2 months, take or use single clove of garlic daily before the breakfast. Before the breakfast, we got an excellent result that will help to solve the problem of respiratory problems, problem of high cholesterol, and other benefit ultimately. And therefore, this is the excellent remedy. This honey also help to boost the immunity, and they also has a anti-cancer property, and so many properties are there. And therefore, it is believed that consuming honey regularly prevent the risk of developing many diseases and help to make you live longer. And therefore, there are some recommendations how much quantity of honey is to be taken daily. For a child, take 10 to 15 gram per day. For youth between age group 30 to 35 age, they take the 30 to 35 gram per day. For a healthy man, 30 to 50 gram per day. And for old people, take 20 to 30 gram per day. And there are different brands of honey we can take according to our problems also. Well, without selling the honey into the market, my suggestion to the beekeepers is to sell the value added product, make the value added product from the honey and sell them. Value added from the honey, we can make honey water, honey mango, honey candy, honey chocolate, aula honey, honey lime squash, honey jam, honey ice cream, honey chicky. Means from honey we can make so many product. From honey we can also make this different types of bakery products also. From the honey, by direct selling the honey, my another suggestion is that by the help of a self-help group, we can also make a cosmetics like face wash, facial cleaning scrub, facial to improve the smoothness. And there are so many from the honey we can make the facial moisturizing pack, crack lotion for dry patches of skin, hair luster. Means there are a very good chance to make a other cosmetic product from the bees also, from the honeys also. And therefore, my suggestion to the beekeeper, instead of selling the direct honey to into the market, add the value, make the value added product from the honey and sell that value added product. There is a good chance to earn the more and more money. From the extraction of beeswax, I have developed a solar wax melter in the honeybee colony. From the different, there are different species of bees, and from Serena indica bee, from 1 year we can collect 50 gram of beeswax. From mellifera we can collect 1 to 1.5 kg of wax. From Dorsetta we can collect 1 to 2 kg of wax. And we know that the price of beeswax is more than honey. And there are different product we can collect, made from the beeswax. From the beeswax is used in more than 300 items. It is used in cosmetics for face cream, cold creams, lotions, lipstick. Beeswax also used in polishes for goods, furniture, electric insulating material, and making the models. The beeswax is also used in pharmaceutical preparations like ointment and chewing gums, making different types of ink
which is used in our paints, varnishes. Beeswax is a high demand for making a special types of candles. Beeswax also used in making the carbon papers, and most of the we are from the zoology. This beeswax is also used in histopathological studies and making the waterproof material in the, and this beeswax is also used in making the comb foundation sheet, and therefore there is a good chance to earn the money by selling the beeswax. Another product which we collect from the bees is pollen. You know that pollen and average from the single colony, we can collect 3 to 5 kg of pollen annually. The price of pollen is 3,000 to 6,000 rupees per kg. And how to collect the pollen? The method is very simple. I have provided training to the more than 300 farmers how to collect the pollen, how to collect the honey, how to collect the bee venom, how to collect the royal jelly, how to collect the propolis. Means methods are very simple and easy, and therefore from the by this simple way we can collect the pollen, and there is a good chance in the market, because pollen is a rich source of protein. It acts as a stimulant for recovering from the illness after the surgery. In foreign countries, the patient are given pollen for fast recovery. This pollen helps for increase the hemoglobin, increase the RBC content in the blood. Pollen specifically in Germany and so many countries, pollen are specifically used for the treatment of sterility, to handle the problem of sterility. Because naturally, this pollen is a product of plants, and this pollen has contain gonadotropic hormones. Pollen has beneficial effect on prostate gland problem, because there are some after 55 individuals men have a problem of enlargement of prostate gland, and to handle this problem, pollen grains are highly used. This pollen grain help to maintain the health of our nervous and endocrine glands, and therefore pollen grains itself has so many medicinal importance, and therefore they in the market they have very good demand. Bee venom. We know that bee venom, it is not venom, it is a medicine, and the price of bee venom is more than gold, because the price of 1 gram of bee venom is 8,000 to 18,000. That depends on the purity of bee venom. From the 20 strong colonies, we can collect 1 gram of bee venom. I have provided training to the farmers how to collect the bee venom. Bee venom is an excellent medicine for the arthritis, for the cancer, and so many diseases. Particularly, this is used in gynecological and children diseases also. Therefore, they have a good demand in the market. Now, we know that another product which we harvest from the bee colony, that is propolis. About 30 gram of propolis per hive per year we can collect. How to collect method is very simple, and therefore there the price of 30 gram of propolis is 1,000 to 1,500, because every product of bees, the values prices is vary, that depends on the quality of that bee product. Recently, if you see on the in so many media, Devendra Sharma from Delhi, he has made a honey or one product from the propolis, and he is claiming this propolis is a good immune booster
and it is a good answer to the coronavirus, to control the coronavirus or to protect from the coronavirus, as it is having a antibacterial, antiviral and antifungal properties. In dental medicine, this propolis is used from the long time. And this propolis is also used to make anti-dandruff shampoos and so many other products also. This propolis also used for making the toothpaste, as it prevent mouth and gum disorder. Therefore, there is also, and these propolis also have a many medicinal properties to cure respiratory and lung diseases. Another product which we collect from the honeybees, that is the royal jelly, 500 gram per year per colony, we can collect the royal jelly. The price of royal jelly, 1 kg of royal jelly price is 16,000 to 20,000 per kg. And there is a good chance how to collect the royal jelly, but for collection of royal jelly, a specialized training is required. After specialized training, we can collect, we can harvest a large quantity of royal jelly in a short period. In India or from state to state, condition is variable, but in case of Satna and some nearby areas, there is a good chance to collect, to harvest royal jelly from that beekeeping boxes also. Because the royal jelly, in one sentence, I want to mention the importance of this royal jelly, medicinal values of royal jelly. Royal jelly has maintained the youthfulness. It is anti-aging. Then we can understand what is the role of this royal jelly in our health. This royal jelly regulates the function of endocrine glands, prevent the obesity. They also used to treat the cardiovascular and gastrointestinal disorder. It is an answer to the cancer. This royal jelly is used to treat hypertension, as it contains acetylcholine. Royal jelly is good for arteriosclerosis and coronary deficiency. Royal jelly boosts the immunity. I mean, there are. It also helps to lower the cholesterol level. Royal jelly helps to increase the collagen synthesis. Means there are so many dozens of medicinal properties are there, and therefore royal jelly has such a high price. You know that from the local boxes, local wood or raw material, there is a good chance to make a bee equipments, and for beekeeping practice, bee boxes are required. And generally in India, 2 species are used in beekeeping practice. One is mellifera and the second one is Serena indica. For making these bee boxes and for from the local woods, from the local carpenter, there is a good chance to generate the employment. From the, we know that there is also good chance to manufacture or to develop other bee equipments. Like for beekeeping, some accessories are required, like bee brush is required, bee brush, feeder, hive tool, honey extractor, pollen trap, bee veil, gloves, even bee dress, twin cage, frames, solar wax melter, knife, smoker, so many things are required. And from these, by making and selling that all these accessories, there is a good chance to increase the to earn the money. Another, this beekeeping also help to increase the agriculture production. We know that presently, our from the last 15 to 20 years, what happened in agriculture sector from India is there is agriculture is slightly shifting from traditional cultivation system to the high value horticultural crops farming, such as cultivation of fruits and vegetables. And we know that most of the fruits plants
they are cross-pollinated. And if the logically, if the crop cross-pollinated area of agriculture is increased, there is a need to increase the number of pollinators, because without pollination, the agriculture production cannot be increased. But today, what happened? Due to the indiscriminate use of pesticides and habitat loss, the population of pollinators, including honeybee, are declined so very fast. And therefore, if you want, therefore, what happened? If you are using a good quality of planting material, providing timely irrigation, providing organic and inorganic fertilizers, pesticides to control the pest, what happened? Vegetative growth of that crop may take place, but due to the lack of pollinator, agriculture production is declined by quality and quantity. And therefore, to increase the agricultural production, beekeeping is necessary. And morphologically, in the nature, there are number of agents, pollinating agents are there, but honeybees are the best. Reason behind that, honeybee exclusively visit many flowers of the same species, not to the different species, during a single trip, and that promote natural hybridization. In a single bee visit 7,000 flowers in a single day. And we know that in the single box, if you a single box, there are 25 to 30,000 honeybees are there, and then calculate how much services pollination services is provided by bees. Another thing is that if you study the morphology of honeybee, is that the body of honeybee is covered by hairs, and hair means body of bees is hairy and hairs are branched. These hairs carry electrostatic charge, and therefore when bee visiting one flower to another flower, there is a good chance these pollen grains entangled very easily to the hairs. And bees has 3 pairs of legs: prothoracic, mesothoracic, metathoracic legs. By using a prothoracic legs, she collect all the pollen attached on her body, collect and store into the pollen basket. And after storing, she continuously visit one flower to another flower, and there is a good chance for the pollination. Another thing is potential of long working hours. Bee start her duty early in the morning and stop her duty late in the evening. Bee continuously work and work. She start her duty 5:20 a.m. and stop late in the evening 7:30 p.m. after 7:30. Actually, this working period is also depends on the temperature. If temperature is below below 8, honeybee cannot leave the colony. When temperature is above 35, we cannot leave the hive. But when temperature is between in the range of 15 to 27, at that time she work very nicely early in the morning and stop her duty late in the evening. Honeybee maintain a population very nicely. One characteristic feature of bees is that as and when, means any season, when in the environment there is abundantly available rich flower source, means flowering area is available, food is abundantly available into the environment, queen bee lay the eggs 1,000 to 1,500 every day. And as she lay such a high number of eggs every day, the population is increasing so fast.
And as the population of workforce is there, there is a good chance to pollinate many flowers and to collect all the bee product in a more amount. And therefore, bee is, when needed, bee easily adapt to the different changing climate. Most of the pollinating insects are seasonal, but bee are available throughout the year. These bee boxes, bee can be reared, can be cultured, and these bee boxes can be migrated from one place to another, from one district to another district, and from one state to another state also. But other insect cannot do such. Another important feature of this bees is bee pollinate the flower from top of the flowers, and therefore bees are the top pollinators. We know that approximately 73% of world cultivated crops are pollinated by bees. 1/3 of human diet is derived directly or indirectly from bee pollination. At a global level, 33 fruit plants have been identified. They need bee pollination service. And in case of India, 12 crops need bee pollination service. Well-pollinated flower or fruits contain more number of seeds, or if fruits is formed, fruit is large, bigger in size, aromatic, they equal in shape and size, juice is more in amount. If seeds are formed, seeds are bigger and well shaped, and they have a 100% germination potential, and therefore bee is the excellent pollinator. Under DBT project, I have organized more than 55 awareness and training camps. Total 300 farmers are attended that camps. Among them, the 150 farmers I have selected for my experiment, and selected farmers were trained for scientific beekeeping. After complete training on one live honeybee box of Apis mellifera and complete toolkit were distributed to them. Farmers use this colony for pollination, and the results are very excellent. What happened? If you, I have published this research paper also in a reputed journal. I want to explain only one example regarding the pomegranate. I have performed that experiment on 18 different crops. In Aurangabad district is known for cultivation of pomegranate. I have selected for experimentation, I have selected 27 farmers. After training, I have given one bee box or installed one bee box in 27 farmers. The total area of these 27 farmers is 58.20 acre. Without bee boxes, or before placing the bee boxes, the production, the anar production or pomegranate production in 58.20 acre is 470.7 tons. After placing the bee boxes in the same area, the yield increase is 722.5 tons. Means in terms of tons, the anar production is increased 251.8 tons. In terms of percentage, the production increased by 53.49%. And if you calculate the economics, by this increase 251.8 tons of pomegranate,
the additional income of 207 cultivators, additional income is increase is 1,38,49,000. I have performed this experiment regarding the 18 farmers. Regarding the sweet lime, the production is due to the bee pollination, production is increased by 71.1%, and the additional income generated by the farmer is 34 lakh 30,000 only. Onion seeds, bees are the excellent pollinator in Aurangabad district. Kannad and Sillod talukas are there. In that places, farmers, this area is known for onion seed growing areas. They cultivate onion for production of onion seed. And if this area is in hectares, and due to the bee pollination, the quality of seed is got very excellent, and they have a 100% germination potential. And 35, I have selected 35 farmers, and additional income generated due to the bee pollination of 35 farmers is 27,16,000. Regarding the pigeon pea, the additional income generated of 20 farmers is 4,94,000. Cotton, the percentage increase is 38.80%, and additional income generated of 10 farmers is 5,06,100 rupees. Per millet, drumstick, guava, lemon, soybean, sunflower, green gram, apple bear, mango, ajwain, bitter gourd, mustard. I have done experiment on these all 18 different types of crops. And because of this, my beekeeping practice, the additional value or additional income generated of 136 farmers is 2,23,47,720 rupees in a single year. Means due to the beekeeping practice, the agriculture production is increased by quality and quantity. Bee farmers or beekeepers also increase their earn the money by trading of pollination services. In our area, number of orchards are there. They using the bee boxes. They rent the bee boxes for pollination. In our area, the Mohan Lokre, Ganesh Barkul, and Dinkar Patil, they're doing the very excellent job, and they giving the colony the 2,500 rupees per month on the rent basis to pollinate the crop of farmers, and honey and other product they get, that is the additional income. Queen rearing, as the beekeepers are increased in our area, there is a good chance for queen rearing, to boost the business of queen rearing, because due to the beekeepers are increased, bee boxes are increased, for getting more and more benefit, queen must be young and good quality. If you rear the queen of good quality, because without queen, the hive cannot be remain as it is. Hive is lost, and therefore, if you rear the hive, and there is a good chance to sell the queen to the others and to get the money, because the productivity of beehive depends on the quality of queen. For the best result, each year beehive should be requeen. Beekeepers क्या करते हैं कि requeening करते हैं हर साल, new young queen
बी बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं। अगर बी रेयरिंग हमने वो बिजनेस शुरू करा तो देयर इज अ गुड चांस टू सेल द queen, good quality of queen, and earn the money. There is another good chance to earn the money is by multiplication of beehives. If you maintain the good health, scientifically maintain the bee colonies, from the one bee colony, we can increase the 1, 2, 3, 4 colonies every year and increase the colony number. And by selling, there is a good chance to earn the money. And therefore, this beekeeping is the best option to increase your income, because the raw material and they have a good chance to generate the income, because the raw material for beekeeping industry are mainly, that is pollen and nectar that come from the flowering plant. Both the natural cultivated vegetation in India constitute has immense potential for development of beekeeping. Regarding in India, about 500 flowering bee plant species, both wild and cultivated, are useful as a major and minor sources of nectar and pollen in India. India has a potential to keep about 120 million bee colonies, because India has 50 million hectares of land under annual cultivation and 60 million hectares of land under forest cover. And therefore, that can provide self-employment to over 6 million rural and tribal families. In terms of production, these bee colonies can produce over 15 million tons of honey and about 15 tons of beeswax. And if you maintain this colony scientifically, we can increase take the double benefit. And therefore, beekeeping is an excellent industry. Beekeeping is having a very excellent option to increase the agricultural production and to provide the self-employment to the rural people. Presently, honey production in India is 85,000 metric tons, and the present national honey consumption rate is 8.1 per person per year. But if you take the example of Germany, and Ulrich Burke is with us, ask to him, in the world, German people consumes more honey, 1.8 gram per person per year. And nowadays, but India also, the many people's aware regarding the benefit of honey, and therefore there is a good chance to there is a good scope to collect a good quality different brands of honey and to earn more and more honey. And therefore, this beekeeping is a very excellent, and it is the part of make in India, because bee pollination increase crop yield and average 40 to 150% or more, depends on the crop. Beekeeping enhancement of good quality or export quality of food. If bee pollinated food, crops or vegetable or fruits have a good value in the market. Production of good quality of seeds, because due to the bee pollination, seed which is pollinated by bees has 100% guarantee of germination. Production of good quality of honey, pollen, propolis, bee venom, and royal jelly. Production of value-added product by using a bee product, increase the rural-based cottage industry, and it is a new option for generation of income to the rural people. This is the eco-friendly technology, promotion and development of forests. They help to balancing the environment and maintaining the biodiversity. Another, this beekeeping is done at a rural area, and whatever bee product we produce, they are sold in urban areas, and therefore it is a good bridge. That is, bee product produced in rural Bharat and marketed in urban India, it is the good option. And therefore, my last quote is that the Albert Einstein
rightly say that beekeeping is a very to conservation of beekeeping is a very important aspect for the survival for existing of man, because Einstein has rightly said that no more bees, no more pollination, no more plants, no more pollination, no more plants, no more plants, no more animals, no more animals, no more man, and therefore save the bees, save the bees. Thank you. I am specially thankful to our honorable Dr. B.N. Pandey sir for giving me opportunity and suggesting my name to the Shailendra Sharma sir, who is always inviting me to deliver such a nice lecture into the webinar. I am also very much thankful to our friends, Dr. Shivesh Singh. He always remembering me and giving a opportunity to stand in front of all of us. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद वायकर सर। आज से आरंभ हुए 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस में का समापन यहीं पर हो रहा है। इसमें हमारे बीच उपस्थित रहे चीफ गेस्ट के रूप में डॉक्टर जी.डी. शर्मा सर, वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। चीफ गेस्ट के रूप में रहे हमारे बीच डॉक्टर सुधीर शर्मा सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बी.एन. पांडे सर, चेयरमैन श्री बसंत शर्मा सर, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। प्रिंसिपल डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी मैम, डीएलएस पीजी कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। कीनोट स्पीकर्स के रूप में हमारे बीच आज उपस्थित थे प्रोफेसर अल्ड्रिज बर्ग सर, प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव सर, प्रोफेसर बी वायकर सर। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, जो हम सभी के लिए भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। और आज का जो ई कॉन्फ्रेंस है यहीं पर समाप्त होता है। कल 11 बजे हमारे दूसरे दिन का जो इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस है वो प्रारंभ होगा और कल के रिसोर्स पर्सन होंगे हमारे बीच प्रोफेसर वी कुशवाहा मैम, डॉक्टर सोना दुबे मैम, प्रोफेसर जी.एस. सोलंकी सर, प्रोफेसर शिवेश सिंह सर। अब मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ और राष्ट्रगान के लिए कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हेलो शैलेंद्र शर्मा जी, सर जी,